audible? Can you please confirm? Okay, perfect. So, Damini, are you there? Can you make me the presenter? Yes, I'm there. Yeah. So Damini, I hope you have, or we are good. Okay. So Damini, I think we are good. So I'm starting with the today's session then. Okay. Yeah. Please make me presenter. Actually, I rejoined, so it is lost. Done. Okay, Damini. Thank you. Okay, guys. So today we are going to work on CNN. So the agenda for the day is to again deep dive into CNN, see through different layers of CNN and different components of CNN and implement a program for CNN and understand it. So before we do that, we also need to understand the feature engineering for image, or maybe the pre-processing for image, right? So first we will understand a bit about that before we go into the modeling. So what you guys need to do, first of all, please install a package which is known as OpenCV. So there is this package, pip install OpenCV-Python. So we will talk about OpenCV, which is very important. Yeah, Nishtha. Guys, you can start this OpenCV install. Nishtha, what's the question? I think you're not audible. Yes, Nishtha. Right. But that does not mean that we don't have class. You may need one doubt class, we will have. You need two doubt class, we will have. So that's not a problem. But yeah, I want you guys to practice, and logically then we will connect in the doubt classes. So practice as much as you can. I'm telling you, Nitika. Yeah, Nishtha, take your time. That's why I'm saying the doubt classes will happen later if you want, after 2 weeks or 3 weeks, whenever. But yeah, let's plan it after 2 weeks at least, not delayed. So practice it. Okay. So okay, Nishtha, you take your time to do revisions, and I will be available for doubts. Okay. So guys, now what we are doing is, see, we need to install few important packages. OpenCV is a very famous package, which is Open Computer Vision. So to do computer vision, we need this particular package. What I mean by this is, any image that you have, you may need to pre-process it. For example, if it's a color image, you want to convert it to gray scale, or you want to rotate, you want to transform an image in multiple different forms. So that's where OpenCV will help us. Uh, we will see that. But if all of you are done with that, so let's start. Okay. So I have just created very few samples here. So what we will do, I have downloaded an image from internet for a swan, and we'll see what OpenCV can do. So if I have OpenCV or Open Computer Vision, I will import it as CV2. So import this package as CV2, Computer Vision version 2. And then there are certain functions available here. Image read करने के लिए, image को process करने के लिए, और write करने के लिए. So first of all, let me try to open that image.
So if you see, programmatically, I have opened this image, or if you see, as soon as I run this image is getting open, which I have downloaded from internet. You can download any image from the internet. Yeah, Gulzar, you have any question? सर So yes, सर अभी जो स्वैन की इमेज जो थी ये इस कोड से ओपन हुई है। ये हाँ इस कोड से ओपन हुई है, राइट। ये अभी मैं इसको रन करूंगा, इफ यू सी इट्स गेटिंग ओपन, राइट, एज सुन एज आई एम executing this cell. ओके, सो आप लोग कोई भी एक इमेज बना लो, नेट से डाउनलोड कर लो, किसी भी, क्या कोई एग्जिस्टिंग अपनी खुद की फोटो कोई हो, उसको ओपन कर सकते हो आप, उसके ऊपर भी मतलब इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ पीएनजी, जेपीजी, कोई भी फाइल, और वो फाइल कहाँ होनी चाहिए आपके, इस पाथ पे, राइट, आप सबको पता ही है अब कि कोई भी इमेज अगर ओपन करनी है वो कहाँ होनी चाहिए, जहां पर सारी नोटबुक्स हैं। This is not in Git. This is not yet in Git. I'm just creating this right now, these codes. तो what I'm saying कि ये PNG की जगह आप कोई और इमेज रख दो और इसको रन कर लो। मैंने ये हाँ कर दिया है, कॉपी पेस्ट निष्ठा। हाँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि ओपन सीवी की पावर, द इंपॉर्टेंस इज given any image, now this is your input data. Now before you feed it to your model, you need to do some pre-processing. So OpenCV will help in that. So I will first I'll just open my images and try to read them, like what that image looks like. So I can open a few sample images and can read it from the directory, that what all images I have. But then I see, okay, there are some images which are colored. Say for example, there were 100 images and I see, oh, these images are like colored, but my hardware is not that efficient. I don't have GPUs, I don't have that much processing. So I want to do processing on a grayscale image. मतलब मेरा काम ये है कि एक इमेज में स्वैन है या नहीं ये पता लगाना है, ठीक है, मुझे कलर से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों अननेसेसरीली अपना मॉडल को हैवी करूं, ठीक है। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती जहां मुझे कलर पे भी प्ले करना होता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, तो एक अलग बात है। बट जब मुझे एक इमेज में इमेज क्लासिफिकेशन ही करना है कि उस इमेज के अंदर एक कौन सा जानवर है, फॉर एग्जाम्पल, दैट्स इमेज क्लासिफिकेशन, तो आई डोंट रियली नीड कलर्स। मतलब कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जब पैरेट आ जाएगा तो हमें पता है कि ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट है, बट currently what we are saying is colors are not important and we don't have that computation capacity like GPUs and all. So we want to convert each and every image into a grayscale image. So OpenCV first of all can do this for me. So what I will do, on all the images in a folder, I will run a particular process. So what is this? In OpenCV हमारे पास एक फंक्शन है कन्वर्ट कलर। कन्वर्ट कलर जो किसी भी गिवन इमेज को आप जिस भी कलर पैलेट में बोलोगे कन्वर्ट कर देगा। मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेगा, वो एक एक कलर पैलेट को दूसरे कलर पैलेट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, लाइक जीजी प्लॉट में होता था, कलर पैलेट्स होते हैं अलग अलग, राइट, जिनको हम कलर मैप भी कहते हैं। तो हमारा पर्पस है कि कन्वर्ट द कलर। सो फ्रॉम OpenCV I use convert color function. This is the image and I am saying this is the color in which I want it to be converted. So I'll say okay, let's do this. So it's converting, and this is what it looks like after conversion. It become grayscale. What's the error? मतलब अगर सबका हो गया OpenCV,
Nitika, I'll come to that. मतलब वो अभी इतना important नहीं है. I'll tell you. But please let me know if you guys are able to open an image. निष्ठा, आप कोई सिंपल इमेज ले सकते हो. आई डोंट नो कि आपने क्या इमेज ली है ये. ये इमेज में प्रॉब्लम आ रही है आपकी. ये आपका पिप इंस्टॉल में प्रॉब्लम आ रहा है या ओपन करते समय? ओपन सीवी इज दिस एरर. तो ट्राई टू कन्वर्ट एन इमेज. Only thing that to do to convert it. But since you have converted it and loaded it into a different object, right? Gray नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उस ग्रे नाम के ऑब्जेक्ट को खोलना चाहते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं. तो हमारे पास इमेज शो करके एक फंक्शन है जो हमें कोई भी इमेज शो कर सकता है. ओके, सो इमेज शो is different, image read is different. Okay, image read will read a file. Okay, wait, Harshita, I pinged you this thing. pip install opencv python. आपको ये बस कमांड चलानी है. एंगल ब्रैकेट हटा दी करो हो, और उसके बाद आप बस उसको इंपोर्ट कर लो एज सीवी विच इज कंप्यूटर विजन वर्जन 2 CV2 एंड देन स्टार्ट टू रन दिस. सो इमेज को जब हम रीड कर लेते हैं हम उसे शो कर सकते हैं. मतलब जिस ऑब्जेक्ट में हमने इमेज को लोड किया, अल्टीमेटली वी कैन शो दैट. तो if you look here, if you look here, this is ultimately the pixel values that we have been talking about, right? What image is, it's nothing but pixel values. So that's what this particular thing here represents. Okay, so ultimately that also means that you have converted your image into the vector values. So you never pass an image to the model, right? You pass this vector to the model. So ultimately, this is what I will pass to the model. I will not pass this to the model, right? But using this pixel positions, I am able to reconstruct the image. Nishta, you can check for the supported images, change it to JPG. But let me show you. You are saying, right? So Nishta is saying कि वो JPG image read करता है कि नहीं, तो let me show you. 1 second. I don't think there should be a restriction, but वो JPG की जगह आप JPEG करके देख सकते हो. ऐसा restriction नहीं होना चाहिए कोई, वरना फिर मतलब that will not give you the completeness, right? अभी ये थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है. ओके, तो अगर JPG नहीं चल रहा है निष्ठा, JPEG ट्राई करके देख सकते हो. बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. So guys, more people please read, ping me if they are able to do this, like read any image.
Guys, please try this out and let me know. It's working fine, Nishtha. If you look my screen, right? It's able to read it. Okay. Wait. So it's able to read it. Okay. I think आपकी image file में कुछ problem होगा. So, but I've downloaded a separate image from the net, and it's still not opening it. It's reading what it, you but do- it's not opening. अच्छा, वो पिक्सल वैल्यूज दिखा रहा है उसकी. अगर उसने उसको रीड किया, उसकी पिक्सल वैल्यू देखो कितनी डायमेंशन की आ रही है. ये आप देखेंगे तो 3 डायमेंशनल आ रही है. मतलब क्या हुआ? RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू. जस्ट चेक इट. वो क्या 3 डायमेंशनल में आपको इस तरह से दिखा रहा है? ठीक है, आप वो देख लेना एक बार. But let's go to the next step. So what I'm saying is, using this image read, we can read any image and check if these are colored images. We will convert them into black and white. How we will do that, we will see this. Okay, so what we will do, we will convert this, convert color. We convert it into grayscale. Now from RGB it's converted into grayscale. So let me show you that. So if you look at the screen, it's grayscale. And now I can further look at its pixels. Or even before I want that, okay, let me go here. So here, these are the pixel values. Okay, I'll explain you how to read this. But pixel values are now in a different dimension because we moved from the color scale to the grayscale. So it will be different. Now, once you have converted it into a grayscale image and you want to write it on your local system, you want to save it on your local system, you can save it like cv2.imagewrite. This is the file, output file in which you want to write it, and this is the object that you want to write. So let's prefer PNG. So I'm writing it onto the PNG format and it's done. Okay. So before we go ahead, please do up till this point where you are able to read any image. Okay. We're able to read an image. You are able to convert it into a grayscale. So I'm pinging you this thing. Convert this color. So what you guys can do, those who are getting errors or issues, open tool
open the snipping tool. Just lines. Even एक स्वैन भी उसके लिए लाइंस है. तो मॉडल को स्वैन भी कुछ समझ नहीं आता है, उसको बस वो लाइन समझ आती है जो स्वैन की बाउंड्री को डिफाइन करती है. तो मॉडल के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को रीड करना भी वैसा ही है जैसा एक स्वैन को, अगर वो ग्रे स्केल कलर की बात नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ ये एजेस प्रॉपरली रीड करनी है. गुलजार, आई विल कम टू दैट वेट. पहले आप लोग एक बार डू दिस. ओके, ये एक तरह से आप मान के चलो ये एडिशनल फंक्शंस हैं. हेल्प यू टू सी दैट पॉपअप, जो आपको पॉपअप दिख रहा है. ठीक है, आई विल टेल यू दैट, बट इंपॉर्टेंट इज create a screenshot, read it in object, and then show it. This is the name of the box that gets opened. ये जो नाम यहाँ दिख रहा है लाइंस ऊपर, वो ये नाम है. ठीक है, so if you are done with, मतलब अभी के लिए एक साथ कंफ्यूज क्या है, but these are not something which is controlling the way your images are interpreted. These are just to open that prompts जो open हो रहे हैं बस. उसके लिए मतलब ये है, तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा, जो भी चीज बंद करनी पड़ेगी. So once you are able to do this image, you are able to show, even able to pixel, right? These are pixel values. Okay, I'll explain you. These are the pixel values. But now the point is कि क्या हमें color image से काम करना है या black and white. तो अगर black and white से हम कौन सा function use करेंगे? First we will use color, convert this image into whichever color you want. So we are saying BGR to gray. BGR कुछ नहीं, RGB जो होता है
यस ये लाइंस, यस गुलजार, इसकी शेप देख लो बस, इसकी शीश और 308 न्यूमेरिक मतलब है पॉइंट्स मुझे वो कैसे मेंशन एंड 3 में लगेंगे, तो क्या है ये इस 3 मींस हियर, ये जो ने बना दैट यू हैव 3 in आया है योर इमेज कलर्स बाय डिफर er, तो is that means is I have it means I have three matrix of 300 by 338. This is first. There will be another. Will be another behind it. Of blue, the blue colors intensity between 0 to 255 जो मैंने आपको कल एक्सेल में समझाया था कि at every pixel position there will be value between 0 to 255. दो कलर की इंटेंसिटी बताता है के ब्लैक and R. Okay, that's what. Okay. So that's what your VR represent. So that means you will 3 by create rows as columns. So that means where the blue, there will be shades of blue. Okay. So that image initially 3-dimensional. Right. This one, so let's see the shape is right. Gray set you have. So the image that you have. So what I was checking is कि जब वो 3-dimensional था स्वैन तभी भी मेरे तो ये 3 मतलब कलर्ड और जब ये स्केल हो चुका है ओके इतना बताया आपको but all you can see like at least that you can convert an image from color to grayscale and then how to see the dimensions, how to see pixel values. This is the most important part before you go into actual model. यहां तक सबका हो गया है क्या? So here this waits that 0 seconds till which you want to wait for before you go into the next level of operation.
Okay, so you wait for here 0 means you don't want to wait, and you immediately go to this destroy all windows. What it will do, it will remove all the previous windows which were there and open the image in a new window. So that's what simply do. This is just to see, but as is when you just to pop up these, you specify the weight key 0 मतलब immediately you open the pop up, so it will directly install and open it. Simply open. So now we have actually created an image from an existing image. This in the field of image analytics is known as data augmentation. What this is known as is this thing which I have done is known as very important. This is known as data augmentation. Anyone know what is data augmentation? Have you heard about this? What is data augmentation? See, data augmentation means given data से given training data से और नया training data बनाना, limited training data से more training data बनाना. तो अब जैसे कि आप यही एग्जांपल समझें, ये आपकी कलर इमेज है. पहली बात तो मुझे कलर पे काम ही नहीं करना, तो मैंने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया और अपनी ग्रे स्केल इमेज जो है वो आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाई. लेकिन अब मेरे पास स्वैन की मान लो सिर्फ एक ही इमेज है जिसपे मुझे मॉडल को ट्रेन करना है, लेकिन कल को स्वैन इसी पोज में तो होगा नहीं, वो तो किसी भी पोज में हो सकता है. तो क्या मैं और इमेजेस ले सकता हूँ इंटरनेट से? बिल्कुल ले सकता हूँ, बट मान लो मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है या मेरे पास एक ही इमेज है सिर्फ समहाउ इस पर्टिकुलर चीज की, तो क्या इसी इमेज को मैं अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर करके नई नई इमेजेस बना सकता हूं? जैसे कि मैं इस स्वैन की मिरर इमेजेस बना सकता हूं. मिरर इमेजेस में क्या होगा कि मैं इसी मतलब ये जाएगी और बाकी बॉडी पार्ट इधर हो जाएगा. मिरर और वर्टिकल मिरर कर मिररिंग हेल्प मी दैट डूइंग दैट. यू कैन डू वर्टिकल मिररिंग एंड हॉरिजॉन्टल मिररिंग, जिसको हम फ्लिपिंग भी कहते हैं, वर्टिकल फ्लिपिंग एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग. तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक एडिशनल इमेज आ गई, जैसे मैं दो और इमेज आ गई राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिपिंग करते ही मैं इस स्वैन को शिफ्ट कर सकता हूं, मतलब फ्लिपिंग इमेज गुलजार, but rotation which is third thing image of swaying and on this axis and by 45 degrees, so that's when axis
of these are nothing but, तो guys ये clear, is it clear, ये pixel positions क्या, right? Will try to learn this thing. Simple models are normally edge detection models. Understand this, huh? Simple models are like edge detection models, where they will try to just detect the edges. Now, if you keep adding, making it complex, it will learn about features, but वो बहुत granular हो जाएगा. Okay, but the what models they do with the edge detection, and this image is different from the model.
बिकॉज उसको अभी भी ये बताना है कि भैया हाँ ये अभी भी स्वैन ही है. So, like, another तो आई कैन कीप सेव द बाउंड्री मॉडल जो है और ये दूसरे में कोई फर्क नहीं है. उसके लिए ये इमेज और पहली वाली इमेज बिल्कुल दो अलग इमेजेस हैं क्योंकि वो ओके डू दैट. Please. Yes, Karan, you can definitely define your right, the which model is taking. So you have to open. Yeah, you don't take there is any degree of and I put in whether which is right or not or what I'm saying it, even I'm saying here it's working fine. So I just need to check those values and define the further degree of possible. You can rotate it by 45 degree, 50 degree, whatever you want. But by so if you work on this, like PGA will also
there is a MISC package. We have certain functions available. For example, MISC dot face. If we look at, so this itself, if you see, is a color image, that MISC dot face. So if you can look at my screen, right? This is a very high resolution. Uh, okay, so let me you have this images. So like MISC dot face is an image. You want to show that image, you can try to use IM show function to show that image. To show it, if you want to work with SciPy, show you that I am saying API which contains this product, multiple images, not only this image, face के अलावा PLT में, so SciPy में भी एक IM show function. See, and I'm saying there are things to show me the to handle this. See, वो इमेज अगर नहीं डिलीट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई दिस. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसके अंदर भी कुछ शो करने के फंक्शंस हैं मैटप्लॉटलिब में भी, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं है जितनी कि ओपन सीवी है. ठीक है. दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि SciPy के अंदर हमारे पास कुछ इमेज मैनिपुलेशन के तरीके हैं जो कि हम मतलब कर सकते हैं. जैसे कि अभी कलर इमेज दिख रही है आपको, तो अगर आप देखें तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको, ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, मैटप्लॉटलिब के थ्रू बस इमेज को शो कर रहा हूं. बट मेन बात ये है कि मैं यहाँ SciPy को कहाँ लेवरेज कर रहा हूँ. SciPy के अंदर मैं इसको रोटेट करके आई कैन ऑल दोस थिंग्स. ओके. So if I want, I can crop this, and there can be multiple other functions which I can
So if you see, I get using SciPy and NumPy, right? There are multiple options available to me that I So if you look here, image is rotated by a particular angle, but within that dimensional space, उसी dimensional space उस image को rotate किया गया, whatever was its
मतलब यही वैल्यूज जो इमेज के एक्सेस पे यही वैल्यूज थी। हाँ, कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं आप? सर जो इमेज डिस्प्ले हुई थी आपकी नोटबुक में, उसी का। ये वाली? हाँ, हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके, yeah, absolutely. So these are your pixel dimensions. So if you look at 768 by 1024, so that's what this represents like. कहाँ गया? आपकी रेजोल्यूशंस होती हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशंस 768 बाय 1024 की इसकी रेजोल्यूशन है इमेज की। ओके, तो ये आपकी रेजोल्यूशंस और उन पिक्सल वैल्यूज को ही मतलब ये पिक्सल की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पिक्सल की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है गुलजार, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। So Gulzar, what I am saying is, consider this image like this thing. This is a matrix, right? So it's like rows, your rows, how many rows you will have, and these are your columns, like how many columns you will have. So 768 rows, right? 768 rows, and then 102, and these are how many columns? 8 and 10 pixel value that you are नहीं पता आपको। If you look here, so this is a grayscale image. So Anam, I am just telling you that ओपन सीवी से सारा काम आपका हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है साइपाई या नमपाई की, बट फिर भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मैं कह रहा हूँ साइपाई में हमारे पास एक मिसलिनियस पैकेज और एक एनडी इमेज, एन डायमेंशनल इमेज पैकेज है। इनको यूज करके हम अपनी कुछ इमेज रोटेट, फ्लिप, ब्लर, ये सब कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, सो एज टू डू डेटा ऑगमेंटेशन। ओके, सो निष्ठा, दैट्स व्हाट लाइक वो दिखा रहा है आपको, बट डोंट वरी अबाउट दैट। वो जस्ट नोटबुक सेटिंग हो सकती है एंड ऑल, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस टू चेक कि यहाँ आप देखेंगे तो वो वन डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया है। ग्रे स्केल इज लाइक वन डायमेंशनल, 0 से 1 के बीच में। Okay. Okay, let me check is. So guys, you can play around with this, check more on this. I don't think any more questions. So Gulzar, you are clear with your question. So pixel value does not mean the resolution. Resolution is different, pixel value is different, Gulzar. Okay, resolution is this. See, this is resolution 768 by 1024. Right? This is resolution. But pixel value is this. These are the pixel value. Each of these independent is a pixel value.
So in any given image, it's like high dimensional images, जो HD images होती हैं, जो टीवी आजकल आते हैं, OLED टीवी एंड ऑल, वो और हाई डायमेंशनल होते हैं क्योंकि वो उतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दिखाते हैं. जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, मतलब जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन उतने ज्यादा पिक्सल्स होंगे. ओके, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन उतने ज्यादा पिक्सल्स. आजकल 4K इमेजेस एंड ऑल आ रहा है, राइट? और आप अपने लैपटॉप की भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, राइट? इस लैपटॉप में पिक्सल्स आप चेंज कर सकते हो कितने दिखेंगे स्क्रीन पे. तो दैट इज योर रेजोल्यूशन ऑफ द लैपटॉप इमेज और स्क्रीन. Okay, so what is a resolution is different, what are the pixel positions is different. Or the pixels per image per inch. Okay guys, so I think enough of this thing. Let me see if there is anything else. Okay, so I was just trying to do this thing, like in a given image, just if you have to draw some rectangle or a circle or chart, that's also possible, but वो हमारे करंटली स्कोप का कोई पार्ट नहीं है. बट ये मैंने क्यों यहाँ पर आपको दिखाया है, उसका रीजन ये है, ये जो गिवन इमेज है उसको मुझे अब CNN मॉडल में पास करना है. तो कैन एनीवन टेल मी कि ये जो ब्लू बॉक्स यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या है? हमारी जो भी CNN पे अभी तक डिस्कशन हुई है, ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर, ये क्या है CNN के टर्म्स में, जब हमें एक CNN नेटवर्क बनाना होता है? वेरी गुड विपुल. एनीवन एल्स? Guys, what do you think this is? This is okay. So Vipul is correct. हमने क्या बात की थी, देखो जब भी मैं अब CNN, अब मेरा इमेज तैयार है, मैंने उस पर बहुत सारी इमेजेस बना भी ली, सब हो गया. बट अब क्वेश्चन क्या है कि मुझे इस इमेज को मॉडल को पास करना है, मेरे CNN मॉडल को. अब CNN मॉडल में आई हैव टू डिफाइन द लेयर्स. सो आई हैव टू डिफाइन व्हाट? कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स. And in convolutional layers, the only thing which is important is the filters. 3x3 का filter, 5x5 का filter, which is also known as kernel. तो ultimately this is a kernel. क्योंकि मेरा मॉडल पूरी इमेज को एक बार में नहीं समझ सकता. मतलब अगर मैं पूरी इमेज एक बार में मॉडल को दे दूंगा तो वो उतना डिटेल्ड में या उतने अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा. उसको छोटे छोटे सेक्शंस पे लर्निंग करानी है. तो ये एक तरह से एक मूविंग विंडो है, राइट? जो हम कल बात कर रहे थे, स्लाइडिंग विंडो है. पहले वो मॉडल आपको सिर्फ इतना ही पार्ट देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि इस इतने पार्ट में ये एजेस क्या हैं, इन एज को लर्न कि भैया ये स्वैन है. लेकिन अभी वो एक अच्छी, तो मैं मॉडल को बोलूंगा कि अभी इसको थोड़ा और स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड करते हैं. लेट्स से स्लाइड इट बाय द 1 पिक्सल, स्लाइडेड बाय 1 पिक्सल ऑन द राइट. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैडिंग या स्ट्राइडिंग? इज इट पैडिंग और स्ट्राइडिंग? स्ट्राइडिंग, very good. So I am striding by a pixel of 1. I can stride by pixel of 2. Now model will learn this entire part. Getting it? ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर आ रहा है. Yes. So model is like छोटे छोटे हिस्सों को समझ के वो एक फुल नॉलेज बनाएगा. मान लो ये स्ट्राइड होता, अभी ये इतने हिस्से पे आ गया है. अब जब वो ये वाला, मतलब एक तरह से फिल्टर है ना, आप फिल्टर के थ्रू इमेज को देख रहे हो, ऐसा समझो ना. आपको फिल्टर के थ्रू इमेज इतनी सी दिखती है,
तो अब मॉडल देखेगा हाँ यार अगर कभी भी मुझे इमेज के इस पिक्सल पोजीशन पे इस तरह का कोई एज मिला, दिस इज नोन एज एज डिटेक्शन एल्गोरिथम, तो आई विल से कि भैया व्हाट इज दिस, दिस इज स्वैन। तो मॉडल विल कीप लर्निंग लर्निंग लर्निंग, मतलब उसके स्ट्राइड्स नीचे भी जाएंगे, राइट? तो इट विल कीप स्लाइडिंग लाइक दिस एंड मॉडल विल कीप लर्निंग। तो दैट्स वाई मैंने ये बस एक ग्रे बॉक्स बना के यहाँ दिखाया था, ब्लू बॉक्स, so that you guys understand, right, what this thing is. Guys, 1 second. So guys, there was some disturbance. So model will study the portion of the image and recognize the full. Yeah, Gulzar. So absolutely, that's how even we learn. मतलब हमें पता नहीं लगता, हमारा जो ब्रेन है उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी तेज है, बट अल्टीमेटली हमारा दिमाग भी चीजों को फुल नहीं समझता है, वो उन्हें पार्ट्स में समझता है और उन पार्ट्स को जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट करता है। ओके, that's what even how our brain do the things. To scan this entire thing, उसके बाद सेकंड बात आती है कि आप स्ट्राइड्स क्या रखो। स्ट्राइड्स आप 1 की रखते हो आइडियली, बट आप 2 की भी रख सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर आपकी इमेज बहुत हाई रेजोल्यूशन, बहुत बड़ी इमेज है और आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो। स्ट्राइड बढ़ाने से, स्ट्राइड्स अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरा मॉडल का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा, ट्रेनिंग टाइम बढ़ेगा या घटेगा, if I increase this, right? So that means if I want model to learn faster, I can increase my strides. But then I also need to check whether it's losing some important information in doing so, by doing the evaluation later. So these were the important things. Now let's go into the model. Okay, so yesterday we went up till this place. Okay, yeah, Gulzar, tell me. सर अभी जो आपने इमेज में जो स्क्वायर जो मार्क किया था क्या वही स्ट्राइड है? वो फिल्टर था, वो फिल्टर था, वो फिल्टर है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्ट्राइड 1 का दिया है, मतलब एक एक पिक्सल से मेरा ये जो सर्कल है, जो जो ब्लू रेक्टेंगल है आप देखोगे राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है।
if you see that Gulzar, I'm closing the images and वो right side पे shift होता हुआ आपको दिख रहा है. पुराना वाला हट नहीं रहा है, but वो मुझे erase करना पड़ेगा. But if you see, it's moving on to the right hand side. At every it's sliding. So that means it's excuse me. So the problem is, अगर मैं एक एक पिक्सल से राइट में मूव करना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा इस इमेज को इतने सारे पोर्शंस को समझने के लिए. लेकिन वहीं अगर मैं इमेज को बोलता भैया तेरी पहली पोजीशन यहाँ है, दूसरी यहाँ, लेट मी शो यू दैट. अभी पहले मुझे ये 100 इमेजेस बंद करनी पड़ेंगी. ओके डन. 1 सेकेंड. Done some color shadings. So it's moving again onto the right hand side. So it's sliding. The only thing that I haven't done is to erase the older one, वरना बहुत अच्छा सा दिखता है आपको एकदम से फिल्टर आगे बढ़ता हुआ. ठीक है. Okay. तो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे अगर यहाँ से स्टार्ट करना है राइट अपना फिल्टर, और फिल्टर का मेरा डायमेंशन है 5x5. ओके. तो दैट मीन्स here तो I am saying rectangle, but the start position and the end position actually controls this thing. So the start position I can give 0 0. Okay Nitika, I can start with 0 0, but then I also need to specify the size of this box, right? So if this is 5x5, Nitika, this is going to be 25x25, right? ओके. पहली बात तो ये 25x25 की पोजीशन हो जाएगी. नहीं सॉरी, 25x25 नहीं, 5x5 सॉरी, ये 5x5 हो जाएगा इस फ्रेम का. So that's what is happening here. Okay Nitika. So I'm ये तो मेरे स्ट्राइड को सिग्निफाई कर रहा है और ये बता रहा है कि आप कितने कितने वैल्यू से आगे बढ़ रहे हो. Okay. So
Okay, so first filter is here, but then the second filter will be here. Third filter will be here because my stride size is 5. And fourth filter will be here. Fifth will be here. तो सिर्फ 6 फिल्टर में मैं इस पूरी इमेज को लर्न कर लूंगा थ्रू वन लेयर ऑफ कॉन्वोल्यूशन. लेकिन वहीं अगर मेरा ये फिल्टर साइज तो 5x5 ही था, लेकिन स्ट्राइड मेरी अगर 1 की थी गुलजार, तो पहला फिल्टर अगर ये था तो दूसरा ये बनता, तीसरा, चौथा, तो बहुत सारे क्या होते, ओवरलैपिंग फिल्टर्स होते. So in that case, you would have got overlapping filters if striding is small. The thing with that is you will learn more because some features are being learned multiple times. So chances of accurately identifying is more. But if you say, no, I will only look at one part of the image only once, that's really not good. You should learn it through multiple overlapping filters so as to better categorize or classify the images. So is it clear, Gulzar? Okay. We need pooling layer, we need flatten layer, we need dense layers. Just remove this for the time being. Batch normalization, it's not needed. So the major layers that we should know is convolutional layers, pooling layers, flatten layers, and dense layers. And this dense layers only we say as FC layers, जो मैं कल आपसे पूछ रहा था, which is like fully connected layers. Okay, fully connected layers. Okay, but there is a difference between a dense layer and a fully connected layer when we talk about CNN. Dense layer और fully connected layer होती सेम ही है, but उनको रिप्रेजेंट to not open too many windows, right? मतलब मैं सिर्फ 40 बार इस लूप को चलाना चाहता था, नहीं तो वो इमेजेस इतनी सारी खुल जाती. ओके, इसको आप चेंज कर सकते हो जितना आपका नंबर ऑफ कॉलम्स है पूरी इमेज को स्कैन करने के, मल्टीप्लाई बाय, सो देयर यू नीड टू पुट सम फॉर्मूला टू पुट इन द एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूरी स्क्रीन को आपको स्पॉन करना है. ओके, but this was random. There is no reason behind it. I don't want to open too many images. Okay, so there is no reason for this being 40. Okay, so now let's understand these layers. So how will we understand these layers? Let's come here. So if you see my screen, you can see a CNN model, different layers of a CNN model, and this is what we are going to relate with this, the code that we have. So let's start it. So what we need to understand first of all is this is your image, the input image. Okay, and this is your convolutional layer. Okay, the convolutional layer, and this is the output of the convolutional layer. Okay, so एक तरह से ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, लेकिन ये आपकी लेयर है. फिर ये जो आउटपुट यहां से निकला, ये इस वाली लेयर में इनपुट गया और ये उसका आउटपुट है.
फिर ये एक और लेयर है, ये उसका आउटपुट है, फिर ये एक और लेयर है, ये उसका आउटपुट है, फिर उसको हमने एक डेंस लेयर में पास कर दिया फ्लैटन करके, जो हमने कल बात की थी, और फिर एक और डेंस लेयर यूज कर ली 512 के साथ, एक और डेंस लेयर, जरूरी नहीं इतनी सारी डेंस लेयर, आप एक ही यूज कर सकते हो। एंड फाइनली जो हमारी सबसे फाइनल आउटपुट लेयर है उसमें 10 न्यूरॉन्स है, 10 न्यूरॉन्स है उसके अंदर, 10। ओके, मतलब यहां पर हम 10 क्लास क्लासिफिकेशन को ही कर रहे होंगे, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो अब हमें समझना क्या है, इनपुट और आउटपुट ये जनरेट कैसे हो रहे हैं। तो आप देखें आपकी इमेज है 28 by 1। तो अगर हमने जो कल इमेजेस की बात की थी वो कौन सी इमेजेस थी, कैन एनीवन टेल मी, हम कल किन इमेजेस की बात कर रहे थे गाइस? कल हम कौन सी इमेजेस पे काम कर रहे थे CNN के लिए, कल या परसों, सॉरी गाइस, बस नितिका को याद है क्या? मतलब किसी और ने आंसर दे दिया हो तो डज नॉट मीन कि आप आंसर मत दो, वो अपना जॉब लेगा, आप अपनी जॉब लोगे। ओके ओके, थैंक्स थैंक यू। सो दैट वाज एमनिस्ट डेटा, एंड एमनिस्ट का भी ब्लैक एंड व्हाइट डेटा, एमनिस्ट का कलर डेटा भी होता है, ठीक है। तो अब वो डेटा भी 28 by 28 का था, तो ये एक्चुअली उसी डेटा को लेके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ये एमनिस्ट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 28 by 28 का। रेड ग्रीन एंड ब्लू, ओके, 3 चैनल्स, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इसको ध्यान से समझना कि ये अब ये वॉल्यूम्स, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनको हम वॉल्यूम्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम्स। जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से दिख रहे हैं इनको हम वॉल्यूम्स कहते हैं। तो ये कैसे बने हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। तो जहां पर भी डायमेंशन एक से ज्यादा है उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। 32 लेयर्स हैं यहाँ, मतलब 26 by 26 की डायमेंशन की 32 लेयर्स हैं, मतलब मान लो 11 की डायमेंशन की शीट्स हैं, मतलब लेयर है, लेयर है 11 by 11 की, लेकिन 64 लेयर एक के ऊपर एक रखी हुई है इस पर्टिकुलर लेवल पे, ओके। या इस लेयर में 11 by 11 की डायमेंशन की 64 आप कह सकते हो सेक्शंस है, ठीक है, 64 इसके सेक्शंस हैं। तो अगर इस वॉल्यूम को आप बीच में से काटो चक्कू लेके, जैसे आप ब्रेड को, तो आप कह सकते हो कि 32 स्लाइसेस बनेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं काटू 32 स्लाइस बनेंगे, यहाँ 64 स्लाइस बनेंगे, हर स्लाइस आपका मतलब यहाँ पर 11 by 11 का है, यहाँ पर 5 by 5 का है। अब वो स्लाइस क्या है, वी विल टॉक। तो एक तरह से 5 by 5 के इस केस में 64 स्लाइसेस एक के पीछे एक रखे हुए हैं, और वही एक वॉल्यूम बन गया। होता है ना बुक्स का, बुक एक वॉल्यूम हो जाती है पेजेस का, तो वो एक वॉल्यूम है। तो ये इसलिए वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में 32 को आप चैनल नहीं बोलते, वो इमेज की फील्ड की एक कीवर्ड है, जबकि ये 32 तो CNN के फील्ड के वर्ड्स हैं। इमेज की फील्ड में जो कलर्स होते हैं, सॉरी, उनको मैं चैनल्स कह देता हूं, ओके। तो ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब बात आती है कि ये जो है लेयर, किस लेयर से ये पास हुआ, इस लेयर से ये पास हुआ,
जब इस लेयर से ये पास हुआ एक तरह से, तो पहले मुझे समझना है ये लेयर है क्या। तो ये लेयर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है 3x3 की। कैन एनीवन टेल मी 3x3 का मतलब क्या है यहाँ? कॉन्वोल्यूशनल लेयर ऑफ 3x3 में 3x3 क्या है? ओके, वेरी गुड। और 32 क्या है? 32 का मतलब है 32 फिल्टर्स। 3x3 के 32 फिल्टर, मतलब मेरे घर में एक छलनी नहीं है, 32 छलनियां हैं, लेकिन हर किसी से जब मैं बाहर देखता हूं अलग ही व्यू मिलता है। मतलब आपके पास 32 चश्मे हैं सेम डायमेंशन के, लेकिन एक से जब दुनिया को आप देखते हो तो वो लाल दिखती है, एक से पीली, एक से हरी। या एक चश्मे का शेप रेक्टेंगल है, एक चश्मे का शेप पॉलीगॉन है, ठीक है, ऑक्टागोनल लाइक। तो देखते आप दुनिया को हो हर चश्मे से, लेकिन जब आप उस दुनिया को देख रहे हो आप एक अलग अलग नजरिए से, अलग तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दैट कि यहां 32 फिल्टर का मतलब है मैं उस इमेज के जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसको 32 अलग अलग तरह से सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब नहीं, okay. um 1 second. It's opening that loop, right? It's opening the loop. Okay, it's not out of the loop. Okay, so I'm out of the loop. Okay. Array. सॉरी, कितने का था? 3x3 का। तो अब जो अलग अलग फिल्टर है वो अलग अलग फिल्टर का मतलब है वो अलग अलग तरह से इस इमेज को समझने की कोशिश करेंगे। एक फिल्टर ऐसा होगा या हो सकता है जो हॉरिजॉन्टल इमेजेस को समझने की कोशिश कर, हॉरिजॉन्टल लाइंस को समझने की कोशिश करे इसमें। दूसरा जो इसमें वर्टिकल लाइंस को समझने की कोशिश करे। तीसरा जो इसमें किसी और एंगल पे कोई लाइंस हैं उसको समझने की कोशिश करे। चौथा हो सकता है कि इसके शेड्स या कंटूर जो, लेकिन वो क्या समझने की कोशिश करेंगे वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ फिल्टर का शेप बताना है। उसके अंदर जो वेट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या सीखेगा, और ये वेट्स बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस अपने आप बेस्ड ऑन द इमेजेस सेट करता है। ओके, तो दैट वाज वन थिंग कि ये 32 का मतलब यहाँ क्या है। स्ट्राइड 1 बाय 1 की है, हमें पता है क्या होती है। पैडिंग है यहाँ पे, तो जो 28 बाय 28 की इमेज है वो 28 बाय 28 की रहेगी, उसमें कोई एडिशनल पिक्सल्स ऐड नहीं हो रहे। तो अब क्वेश्चन आता है जो हमने कल भी एक फॉर्मूला समझने की कोशिश की थी कि इफ दिस इज इनपुट टू दिस व्हाट विल बी द आउटपुट। yesterday we did that, right? So there was a formula n minus of f plus 1, so 28 minus 3 plus 1 26, and same here which is like 26, so 26 by 26 का मेरे को एक आउटपुट मिलता है यहां से।
ओके, और ये 32 मतलब जितने फिल्टर यूज करोगे उतनी लेयर रहेंगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉन्वोल्यूशन लेयर में ही 64 फिल्टर यूज कर दिए तो आउटपुट जो है वो 64 लेयर का निकला। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला n माइनस ऑफ f प्लस 1 जो हम कल बात कर रहे थे। तो डोंट वरी कि ये क्या लिखा हुआ है, n माइनस ऑफ f प्लस 1। तो दैट मीन्स कि इसकी डायमेंशन और इसकी वेट जो डेप्थ है वो हमें पता लगी, वॉल्यूम कैसे बन रही है। And this was a filter and you got this convolved output. This is a convolved output. On image you applied a filter, you got a convolved output. But on the same image you can apply multiple filters also. So don't think that on a grayscale image you cannot apply multiple filters, क्योंकि filters का मतलब ये है कि आप कितने नजरिए से उसे देखना चाह रहे हो। तो एक तरह से आप ये देखो तो ये एक वॉल्यूम बन गया है आपका, एक घर में जैसे बक्सा होता है, 3 डायमेंशनल बक्सा, तो उसका ये एक पर्टिकुलर ग्रीन सेक्शन है। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये ग्रीन सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लेयर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये एक लेयर है, उस लेयर का ये एक ग्रीन सेक्शन है, ऐसे पीछे वाली लेयर का एक और ग्रीन सेक्शन है। तो वी विल टॉक अबाउट ये क्या है, बट या वी विल टेक अ या गुलजार एनी या व्हाट द क्वेश्चन गुलजार? So Gulzar, this is what I'm saying. First of all, this is, you don't need to worry about it. But yeah, these are again two functions from the OpenCV which helps you to open up or plot that screen that you are seeing, right? जो pop-up है, wait key is sort of asking you to wait for this much time before you go on to the next step. And destroy all windows is like destroying any window which was previously there and opening a new window, that kind of operation. But you can read more about it, it's more than that. Okay, you just do question mark, just do this. Okay, sorry, you can do this question mark thing and try it out and you can read more about it. But what doing so you wait for a press key, like the function waits for a key event infinitely, मतलब वो वेट करता है, आपको एक की प्रेस करने को बोलता है, लेकिन इतने टाइम के अंदर अंदर आपको वो की प्रेस करनी होती है। अगर आप नहीं करते तो वो मतलब आप ऐसे दे दोगे तो वो वेट ही करता रहेगा आपकी कीबोर्ड की एक की प्रेस करने को। ठीक है, रीड अबाउट इट, दैट्स नॉट so important, I'm not going much into that. Yeah, it's closing, yeah. So Nitika, the width and depth of what? 1 second. Okay, here. So I am saying that this is the input image, 28 by 28 की। तो ये आपकी रेजोल्यूशन हो गई ना, इतने 28 रोज और 28 कॉलम्स।
Getting it? It's like a two-dimensional matrix, 28 by 28, and one is its depth. Depth मतलब channels. This so Nishtha, here we are talking about this input going through this layer, this input going through this layer, okay, and then you are getting this as output. So this is actually a different formula, because normally you talk about n minus of f plus 1, correct? That formula only holds true if there is no striding. I will come to that after the class, not after the class, after the break, when we will talk about this. अभी हमने यहाँ तक की बात की है. तो जब हम स्ट्राइड इंक्लूड कर देंगे तो फॉर्मूला बदल जाता है, हम उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्ट्राइड्स भी करते हैं, क्योंकि वही तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फास्टर हो जाएंगे आपकी कंप्यूटेशंस अगर आप स्ट्राइड्स बढ़ा दोगे. तो सिर्फ एक तरह से 13 की डायमेंशन छोटी हो गई, नहीं तो डायमेंशन बढ़ जाती है इसकी. गेटिंग इट नितिका? वो फॉर्मूला आपका बदल जाता है. ये फॉर्मूला तब है जब स्ट्राइड है. अगर 1/1 की स्ट्राइड है तो इसकी वैल्यू मतलब एक तरह से क्या हो जाएगी, 1. तो वो n माइनस ऑफ f प्लस 1 ही रह जाएगा. ठीक है. तो guys will connect after break. Nishta, I'll take your question after the break. So we'll connect at 12:15.
Hi everyone, am I audible? Okay. So, Nishta, you had some question. Please ask. I was asking the same thing about the CV2 reading error that I was getting. It's still not resolved. The error that is not yet resolved. Sir, it's reading, but it's not showing. And sir, I googled the error. It is for the path, the wrong path direction that it's not saving in the right folder. So, but I've saved the same file where all my Let me know. Okay. Harshita also, I think, was getting this problem. So, Harshita, you are also getting it? Harshita, is it resolved for you or you are still getting it? Um, okay. So, okay, we will do it after the class, Nishta. So now let's go into this thing, which is understanding the model, the CNN model. So what we have to understand is, first of all, what I am doing here is I am building a 3x3 ka filter. I am building a 3x3 ka filter, and then 32 filters are there. Each one of these will have their own weights. So that means, can anyone tell me total how many weights this particular layer? Okay, Harshita, fine. Uh, So total weights that this particular layer will learn is 32 multiplied by 3 multiplied by 3. So that many is particular layer. Okay. Guys, getting this? कल जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपकी एक इमेज है. If this is a image, right? This is your image with a 6x6 image into 1. Write it 1. That means one channel. You have a 3x3 filter, but all these are nothing but the weights that model learns during the back propagation or the gradient descent. So this guy Yan Li Kun, right? Yan Li Kun, he built this approach of CNN where we have gradient descent and learning these weights. So total 9 weights. But if there are 32 layers, okay. So you will get 4x4 के 32 मैट्रिक्स आपको आउटपुट मिलेंगे. तो एक तरह से ये आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर है और ये यहां पर उसका आउटपुट है. ओके. तो वही चीज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर में 3x3 के 32 फिल्टर यूज किए हैं. एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है. रेलू की जगह हमें आइडली
ली की रेलू यूज करना चाहिए, ठीक है, जस्ट रीड अबाउट इट and see what's the difference between ReLU and leaky ReLU. So we should rather use leaky ReLU. That has some more benefits as compared to ReLU. Okay, rectify linear unit. Kernel initializer is just to decide the initial weights. Initial weights for what? For the values like 1 1 1 0 0 minus minus minus, ये जो है ये initial weights है मान लो. Input shape is the shape of the image. Okay, that's another thing. So now here I have only one channel or one color intensity. So my first layer is built. Okay, now the second layer that I am building is a pooling layer. So let's see what's a pooling layer. So here on my screen, if you look at, if this is your volume or the output of a convolutional layer, तो convolutional layer के बाहर मैं एक layer लगा रहा हूँ जो है max pooling layer, और max pooling layer का size है 2/2. That means ये क्या है, आपका इनपुट है, मान लो ये आपका इनपुट है मैक्स पूलिंग लेयर के लिए. ओके, और उसके ऊपर आपने एक 2/2 का फिल्टर लगाया. 2/2 का फिल्टर जो यहां पर होगा, मतलब इस तरह से 2/2 का फिल्टर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब इट जस्ट ये 2/2 का फिल्टर हो गया. फिर एक 2/2 का फिल्टर, करेक्ट. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इस बंदे ने क्या किया, इसने आपको एक फिल्टर ये है, दूसरा फिल्टर ये है. कोई मुझे बता सकता है कि इसके केस में ओवरलैपिंग फिल्टर्स क्यों नहीं है? पूलिंग लेयर भी कन्वोल्यूशनल लेयर की तरह ही है, आप अभी इतना मान के चलो. उसके अंदर क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, बट एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ऑफ स्ट्राइड ऑफ 2, because of stride of 2. So if your filter is of the size say n cross n and your stride is also n, you will never get overlapping filters, चाहे वो पूलिंग लेयर की बात हो चाहे वो कन्वोल्यूशनल लेयर की बात हो. ओके, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि मैंने यहां एक फिल्टर बनाया, ये मेरा इनपुट है, पूलिंग लेयर के लिए गया, 2/2 के फिल्टर्स इस पे चिपक गए, 4 फिल्टर्स लग गए. लेकिन अब मैक्स पूलिंग करता क्या है, मतलब ये आउटपुट है, ये आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आउटपुट की डायमेंशन क्या है. इनपुट की डायमेंशन क्या है, आपको दिख रही है यहाँ पे 4/4, गाइस इट्स 4/4, और फिल्टर की डायमेंशन क्या है 2/2. तो अगर सिंपल कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती तो 4/2 एंड 2/2 विल गिव मी व्हाट, कैन एनीवन टेल मी? 4/4 के इनपुट पे 2/2 का फिल्टर अगर मैं लगाऊं, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे इंटरव्यू में भी, ऑब्जेक्टिव में भी. 4/4 के इनपुट पे 2/2 का फिल्टर लगाया, मेरा आउटपुट डायमेंशन क्या होगी? 3/3, करेक्ट. मतलब n और ये f, तो n माइनस f प्लस 1 विच इज 3/3. ठीक है, लेकिन स्ट्राइड भी हमें ध्यान रखनी है. तो n माइनस ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय द स्ट्राइड. ओके, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 1.5, बट we take it to, okay, we take it to, there is another formula, some people use this also, n minus of f by 2 plus 1. नहीं, स्ट्राइड डेसिमल में नहीं हो सकता गुलजार. तो n माइनस ऑफ f बाई 2 प्लस 1. सो अब आप देखोगे तो 2/2 मिल रहा है आपको. ठीक है, some people use this formula also, but then they use the floor function. इसका जो भी आउटपुट आता है उसमें फ्लोर फंक्शन लगाते हैं. तो 1.5 को 2
मतलब हो जाता है वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमें पता लगा कि हमारी जो आउटपुट डायमेंशन है, आउटपुट की डायमेंशन, उसका फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय एस। अगर हम पूरे फॉर्मूले की बात करें, एन माइनस ऑफ एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय एस, या फिर एन माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, either of these formula you can use. So the value we got is 2 by 2. So ये चाहे आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर में लगाओ फॉर्मूला, पूलिंग लेयर में लगाओ, फॉर्मूला सेम है, अप्रोच सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देन क्वेश्चन ये आता है कि मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है। मैथमेटिकली डिफरेंस ये है कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर में यहां पर आपके पास वेट्स होते थे, राइट? आपके पास यहां पर वेट्स होते थे, और वो जो वेट्स होते थे वो इन वैल्यू से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होते थे और फिर ऐड होते थे, करेक्ट? यहां पर ऐसा नहीं है। पूलिंग लेयर में हम क्या करते हैं कि जो भी फिल्टर है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उनमें से जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू है वो ले लो। तो इस पिंक वाले में बड़ी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 8, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 4, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 3। तो दिस इज नोन एज मैक्स पूलिंग। सिमिलरली there is minimum and there is average pooling. I was telling you, right, yesterday there is max pooling and average pooling. So we fill these values by that formula which is for this layer. But the question is, इससे हमें अचीव क्या हो रहा है? तो एक तरह से आप ऐसा समझें कि जब आप एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर, मतलब पूलिंग लेयर मान के चलो कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर का एक स्पेसिफिक केस है। कॉन्वोल्यूशन में भी आप क्या करते थे कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करते थे और उसका जो भी मैथमेटिकल आउटपुट आता था यहां पे डाल देते थे। पूलिंग में भी आप वही कर रहे हो, मैथमेटिकली वही कर रहे हो। उसको मैं यहां ले रहा हूं कि मतलब मेरी इमेज में उस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे डोमिनेंट जो पिक्सल वैल्यूज हैं उसको मैं ले रहा हूं। ये क्या करती है कि अगर आपकी इमेज, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स नॉर्मली लर्न अबाउट द शेड्स, like अगर मान लो there is a circle, so convolutional layer will try to understand that okay, the shape is something like this, dot 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 dot, like that. But pooling layer, or the rather max pooling layer, will try to understand that okay, this is not just dots, this is like a circle, a proper circle, because it's focusing on the highest intensity values. So ये प्रॉपर आपके एजेस को कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज की कोशिश करता है। ओके, या सो डोमिनेंट मतलब नॉट, डोमिनेंट का मतलब सबसे फ्रीक्वेंट नहीं है गुलजार, डोमिनेंट का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, जो मतलब जो डोमिनेंट है, मतलब जो सबसे इंटेंस कलर है उस पर्टिकुलर फिल्टर में। अब कलर तो मैं बोल रहा हूं, मतलब ये 6 कलर को नहीं, हो सकता है किसी शेप को रिप्रेजेंट करता हो, किसी एज को रिप्रेजेंट करता हो, जो भी डोमिनेंट वैल्यू ये समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो और सर ये तो ठीक है, n-f+1 का जो फॉर्मूला था, पहले आपने ये अपॉन 2 लिखा था, उसके बाद जब अपॉन s किया, एक बार वो समझा दो। अभी आऊंगा मैं उस पर भी, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। ठीक है सर। ठीक है,
तो अभी हमें समझ आया कि भाई देखो कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या कर रही है और पूलिंग लेयर क्या कर रही है ये सिमिलर काइंड ऑफ लेयर्स, बट इनके पर्पसेस अलग अलग हैं to better understand the images, or rather the particular part of an image, to learn that and pass that information to the subsequent layers. So let's look at this thing. So here the max pooling layer that we have is 2 by 2. So that means the filter is of 2 by 2. Here the filter for this is 2 by 2. That's the max pooling layer. And 2D means we have a 2D image. It's like two-dimensional image. We don't have multi-dimensional or multi-colors and all. So we are talking about convolutional 2Ds. Convolutional 1D, 3D are also there. Okay, convolutional 1D normally time series forecasting में use होता है, but that's a different thing. So we primarily use convolutional 2D, not 1D, not 3D. We use 2D. Even for the images with more channels, we use 2D. So we don't use 1D, we don't use 3D. But yeah, 1D is used mainly for time series analysis kind of things, and 3D is also there. Okay. So now we know the max pooling layer. There is average pooling layer also. Now the third layer is the flatten layer. Now what is this flattened? As I told you earlier, that now consider that this is your final output that you want to pass into the final output layer, या आप आउटपुट लेयर में भेजना चाह रहे हो, क्योंकि जो प्रिडिक्शन होती हैं, मान लो आपको करना है कि whether this is an apple tree or a banana tree. Okay, you cannot pass this to this particular output layer or a dense layer, or I would say a FC layer or a fully connected layer, which is having say these two neurons. So what I need to flatten this. By flatten, I simply do what? 6, 8, 3 and 4. I'll convert this 2D into a 1D array. That's it. And I'll pass this data to this. I'll pass this data to this. Here I will have some weight. Here I will have some weight. And that weight, when processed over this using the activation function and the summation, like we normally do, we will get the probability of the output class. So flattening is nothing but this. Even if this would have been a 3-dimensional object, मतलब अगर इसके पीछे एक और लेयर होती, एक और फिल्टर की लेयर होती, तो भी हम उसको फ्लैटन करते, और वो वैल्यूज इस सिंगल डायमेंशनल एरे में ही ऐड होती चली जाती. पीछे वैल्यू अगर 1 2 3 4 होती, तो इसी में 1 2 3 no arguments, and then we are saying okay, use a dense layer. But do you want to use some intermediate dense layers also? Because it depends. जितनी ज्यादा आप लेयर्स ऐड करोगे, मॉडल उतनी ज्यादा फीचर्स को अच्छे से लर्न करेगा, नॉन लीनियरिटी को उतने अच्छे से लर्न करेगा. ओके, यहाँ पर भी कर्नल इनिशियलाइजर जो है वो एच ई यूनिफॉर्म, विच इज अनदर इनिशियलाइजर, कि अब हमें पता है कि डेंस लेयर में भी हर एक न्यूरॉन के साथ एक वेट असाइन होता है, राइट? आई होप यू गाइज रिमेंबर इट, कि आपके डेंस लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो पीछे जिस भी लेयर से कनेक्टेड है, यहाँ पर कुछ वेट्स होंगे उनके. तो ये इनिशियल वैल्यू है, बाद में ये वैल्यूज जो इनिशियल होती हैं यही बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे चेंज होती हैं. ओके, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेयर है, आप यहाँ रेलू यूज कर सकते हो, बट आउटपुट लेयर में आपको सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड ही यूज करना है. So once we have built this black box, which is my neural network for CNN,
then I will compile it. But while compiling it, I need to pass few things. One is categorical cross entropy, which is what I'm doing. But what is my optimizer? So we have been using Adam optimizer, but you can also use SGD, stochastic gradient descent, right? Try this with Adam also. Try this with a way to modify the learning rate while model is running. There was a way in TensorFlow, right? Because we are doing Keras, TensorFlow में कुछ चीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. हमने 3 ऐसी चीजों की बात की थी. वो क्या थे? टेंसर, वेरी गुड नितिका, कॉलबैक्स. यस. सो टेंसरफ्लो में कॉलबैक्स होते हैं. उनमें से एक कॉलबैक क्या होता है? विच इज सेइंग modify your LR on plateau, right? Change your learning rate on plateau. So you can use that, which is like a variable learning rate. There is third type of learning rate known as adaptive. Okay, so I'm pinging you guys, read about it. Constant learning rate जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वेरिएबल जो हमने कॉल बैक में बात की. एक तीसरा और होता है जिसे हम कहते हैं अडेप्टिव. वो क्या होता है? रीड करना. अडेप्टिव लर्निंग रेट. These are the 3 learning rates. मतलब way of setting the learning rate, not learning rate. And there is this momentum, which is like another parameter. We can do question mark and read about it. So there are parameters like momentum and tolerance, which are some other parameters. Okay. But now the important thing for this, I'll do that, Gulzar. The point is, now we know this layers. We know the learning rate, the optimizer, the loss function. So what we will do is, where is this? Okay. So I was running a program. It's complete, I think. Yeah. Okay. So we will do this. You can try this Adam optimizer also. Okay. Let's see what's left from the concepts point of this. So now you know, कभी भी कोई आपसे अगर CNNs के बारे में पूछे, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं. पूलिंग, मोस्टली क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपका कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स और पूलिंग लेयर में क्या फर्क है, फिल्टर्स क्या होते हैं, पैडिंग और स्ट्राइडिंग क्या होती है, पूलिंग लेयर कितनी तरह की होती है, एंड देन फ्लैटन क्यों किया जाता है या फ्लैटनिंग क्या होती है, देन बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इज अनदर थिंग, and different kind of optimizers which are available. Okay. And there is another very important thing, which is what is the benefit of CNN over a simple MLP, multi-layer perceptron. So let's see that. So if you look at this diagram, guys, I have multiple layers, but the benefit with the convolutional layers, like ये जितनी भी इस साइड में ये सारी convolutional या pooling layers हैं, right? तो उनको हम convolutional layers ही कह देते हैं. मतलब ये सारी आपकी convolutional या pooling layers हैं, और इस साइड पे आपकी क्या है, जैसे MLP में होती हैं dense layers, right? तो यहाँ पर तो हमारे number of weights that model will learn we know, right? यहाँ पर if I talk about, हमने नंबर ऑफ वेट्स बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए हैं. इस लेयर में नंबर ऑफ वेट्स सिर्फ 3/3 मतलब 9 ही वेट्स हैं. बट हमने क्योंकि 32 फिल्टर्स यूज किए हैं इस लेयर में, तो वो 9 मल्टीप्लाई बाय 32 हो गए, तो हमारे वेट्स बढ़ गए. बट फिर भी बहुत कम वेट्स हैं. लेकिन यहां अगर मुझे एक डेंस लेयर लगानी पड़ जाती तो there could have been
too many weights. Why? Because first of all, it depends on input shape. अभी तो 28 by 28 है, right? But consider that this is a 1000 by 1000 का image. So 1000 multiplied by 1000, that many features I have. Every pixel position is a feature, हाँ? एक इमेज में हर पिक्सल पोजीशन एक फीचर है, तो इतने सारे अगर इनपुट फीचर्स हों एक परसेप्ट्रॉन लेयर में, तो आई नीड टू मैनी वेट्स टू लर्न दोज फीचर्स. मतलब इस लेयर में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे और फर्दर लेयर्स में भी बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, और हर लेयर से में मेरे नंबर ऑफ वेट्स वो ड्रास्टिकली एक्सप्लोड हो जाएंगे. जबकि CNN में आपके जो वेट्स हैं वो कंप्लीटली किस पे डिसाइड हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस लेयर पे. इमेज चाहे छोटी है, okay, that is first of all very important. So convolutional neural networks actually reduces the number of weights that your model needs to learn. The only number of weights that every layer needs to learn is equal to the size of the filter. Plus, if you have multiple filters in each layer, like one filter is understanding horizontal rows, one is vertical, one is the shape, size, something like that. Same is the case with pooling. Pooling में तो ultimately कोई weight है भी नहीं, क्योंकि pooling is just a formula whether you want to take a maximum value or a minimum value. तो यहाँ तो बल्कि आपका कोई ऐसा weight है भी नहीं. But weighted pooling is also there, which is something else. So ultimately, if you look at, so your number of weights are only this convolutional and this convolutional thing, the major things, which is reducing the number of weights in the overall architecture. यहाँ पर definitely number of weights, अब आप देखो 1600 हैं, 1600 nodes हैं और densely connected हैं, तो 1600 weights तो ऐसे ही हो गए. Getting it? और ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पीछे से कितनी लेयर्स इसके अंदर कनेक्ट हो, कितनी नोड्स इसमें कनेक्ट हो रही हैं. तो दैट्स व्हाट द फर्स्ट थिंग इज. मतलब ऐसा नहीं है कि आप CNN सारी डेंस लेयर से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो. आप हर एक पिक्सल को एक फीचर समझ लो और उतने सारे फीचर्स मॉडल में पास कर दो, बट दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम. Okay, so now we have understood that what's happening here is our image is going like section by section. It's like section by section. ये एक प्रोजेक्शन है आपका सेक्शंस का, और हर सेक्शन आपका फर्दर छोटा ही होता चला जाता है. मतलब और ग्रैनुलैरिटी पे आप उसको समझने की कोशिश करते हो थ्रू आउट डिफरेंट लेयर्स, कॉन्वोल्यूशनल, पूलिंग लेयर एंड ऑल. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद आप एक पूलिंग लेयर डालो, ऐसा कुछ नहीं है. आप सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स रख सकते हो या कॉन्वोल्यूशनल के साथ एक पूलिंग लेयर रख सकते हो. ओके, बट ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, बट आउटपुट में आपको मिनिमम एक चाहिए, तो उससे पहले आपको एक फ्लैटन लेयर भी चाहिए जो कि उसको फ्लैटन करेगा. तो अगर मैं इसकी बात करूं 5x5x64, तो ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका टोटल साइज होगा दिस 25 मल्टीप्लाई बाय 64. जितने एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे एलिमेंट्स इन 1600 एलिमेंट्स पे एज इनपुट की तरह जाएंगे एंड प्रोसेसिंग. नाउ द पॉइंट इज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आए हैं, बट इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आंसर दैट.
कि आउटपुट का जो भी शेप होता है वो होता है n माइनस ऑफ f प्लस 1 डिवाइडेड बाय s। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, n माइनस f प्लस 1 डिवाइडेड बाय s। नॉर्मली क्योंकि स्ट्राइड 1 की होती है तो हम इसकी बात करते नहीं थे, हम कहते थे n माइनस f प्लस 1, लेकिन इट इज n माइनस f प्लस 1 डिवाइडेड बाय s, और n माइनस f डिवाइडेड बाय s प्लस 1 अलग से। And what we do, we take the floor function. This is floor, I think, yeah, floor or ceiling. ये जो नीचे वाला होता है, is it floor or ceiling? I think this is floor, right? Mathematically, guys, those who are from maths, right? This is floor function, right? Which tells you the highest value lesser than this value, right? Something like that. So you will get the output dimension. You don't take decimals, so that's why we do it numeric. Okay. यहाँ पर उसने फिर से वही n माइनस एफ प्लस 1 कर दिया, बट इट्स लाइक सेम थिंग। और जो विड्थ होती है आपके वॉल्यूम की, ये एक वॉल्यूम है, राइट? इसकी विड्थ जो है वो डिपेंड करती है कि कितने आपने फिल्टर्स यूज किए हैं, पूलिंग फिल्टर्स या कॉर्न फिल्टर्स, विच एवर फिल्टर्स, बट कितने वो फिल्टर्स आपने यूज किए। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो ध्यान रखनी है आपको, अगर यहाँ P इक्वल टू 2 हो जाए, okay, and these types of questions again comes. So this is the input and you have a 3 by 3 filter, 32 filters, stride is of 1 by 1, or let's say stride of 1, don't get confused, it's like stride of 1, P of 2. Then can anyone tell me the size of this? जो डेप्थ है वो तो सेम ही रहेगा, डेप्थ तो 32 का ही रहेगा, बट ये क्या होगा? Okay, Karan gives some answer. Let's see what others say. मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरी जो पैडिंग है अगर वो 2 है, इनिशियली तो पैडिंग कुछ थी नहीं, अब मैं कहता हूं मैंने पैडिंग ऑफ 2 कर दी, तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा? Guys, remember it's simple. Padding means you will, if this is an image 2 by 2 का image, if this is a 2 by 2 का image, padding means you will add like zeros, चारों तरफ, that is P padding of 1. Padding of 2 means एक और layer of zeros. So that simply means your dimensions are changing, right? Instead of 28 by 28, dimension is 30 by 30. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल, राइट? तो अब n बस आपका चेंज हो गया ना, n becomes 30. So n minus of 3, which is like 27, and plus of 1, which is like 28. So 28 by 28 is what you will get. Correct? Yeah. Thanks guys. Good. So that's what we have. Okay. So let me see now what are the other important things. Now the other important thing is this batch normalization. What is this batch? Yes. Sir, padding of 2 means so 2 layers will be added na, on both the sides. Correct.
So it मतलब 4 should be added na in 28. 4 should be added. 1 second. Huh? Hmm. Yes, you are right. Yes, you are right. Thanks, Nitika. You are right. Because we are adding value here also and here also. So for 1 it is 2, for 2 it is 4. So guys, yeah, Nitika is correct. So that will become what? 28, that's 32. So all of us were wrong. Nitika, yes, you are correct. So guys, that's 32. So if you want to know the formula is n plus 2p. Yeah, so that's what the formula is, n plus 2p minus of f plus 1. That's the formula actually. Okay. So we have, for every padding, we are doing both left and right padding. So it's n plus 2p. Okay. So it's like, अभी कितना हो जाएगा ये guys? Can you again tell me? Can you guys please tell me again? What will be the corrected answer? Yeah. So this is the formula, but yeah, you don't need to remember the formula. If you simply know this approach, that for every padding, you are going to do padding on both left and right. So it's like number of layers will become like n plus 2 times of the padding. So your new n value will be n is equal to n plus 2p. Okay. Anyone, any other questions, doubt, clarification? Yes. सर वही पहले आपने जो पैडिंग का जो हमसे पूछा था वो आपने सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट का पूछा था ना, जिसमें 26 and 26 लिखा हुआ है। करके दिया आंसर जो तो आप ट्वाइस सही, पैडिंग। अगर आपने इसको कंसिडर करके किया था तो आप करेक्ट थे, बट मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये पूछा था कि इसमें पैडिंग करने के बाद मैंने आपको यहां बोला था ना, देखो P इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था P इज इक्वल टू 2 यहां है, तो मतलब मैं इस लेयर की बात कर रहा हूं ना, तो इस यस लेयर का सर। इनपुट, तो फिर आपको मतलब ये ध्यान देना होगा कि मैं पूछ क्या रहा हूं, तो आई एम आस्किंग दिस, ठीक है ना। बट या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, तो then you have to consider this input, not this. Okay. ओके, तो एक बार कंफर्म कर दो ये जो क्या जो मैंने जो दिया है इसमें आंसर। करेक्ट है, करेक्ट। यस सर। Okay. There is this thing also, right? Batch normalization. So I told you to hold on this. So what happens is, see, the input that we have, the data that we saw yesterday, this is the input which we need to train, and the values are between 0 to 255. So now मैंने आपको एक इमेज दी, आपने एक इमेज से 50 इमेज बना ली ओपन सीवी से या साइपाई से, सब इमेज को आपने बाद में देख लिया कि सबके डायमेंशंस भी सेम है, क्योंकि कुछ डायमेंशंस बढ़ भी जाती हैं, घट भी जाती हैं। जब आपने ये सब कर दिया, जो डायमेंशंस घट जाती हैं उनको बढ़ाने के लिए भी पैडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, विच इज अनदर थिंग। अब आपको ये करना है कि इन वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना है, मतलब सारी वैल्यूज को 0 से 1 या -1 से 1, you want to bring in a certain range, so you want to do scaling. तो यहां पर भी हम स्केलिंग कर सकते हैं, min max scaling. So we prefer in image analytics values between 0 and 1,
So we do min max scaling. So on each of these we will do what? Min max scaling. So we prefer that convert each value between 0 to 1. So what I will do is I simply need to take my training vector or matrix, the training matrix, divide each value by 255. Will it give me values between 0 to 1? No. Min minus max. So guys, there is this thing, right? You have x minus of min divided by max, right? This is what you normally standard deviation, right? So you can try these also for your scaling, or you can try this also. This is a very flat standard approach to divide it by 255. But you can do min max scaling also. You can do standard scaling also. Not necessarily that you should do this, but yeah, you can do this. But let's see how the data will change. Okay, so let me run it here. So I'll keep pinging you. Please follow along with me. Let's see if we have this data loaded. तो आपको रियल वर्ल्ड में कई बार इमेजेस दे दी जाती हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ वेक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए इमेजेस में से वेक्टर्स कैसे निकालने हैं. ओपन सीवी विल हेल्प यू टू डू दैट. और फिर आप ओपन सीवी से ही उनको प्लॉट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने pyplot.im शो यूज किया था. आप ओपन सीवी से भी ये काम कर सकते हो. pyplot.im शो यूज किया था, आप ओपन सीवी से भी ये काम कर सकते हो. ठीक है, तो हमने 9 इमेजेस यहाँ प्लॉट करी. सो ये नोटबुक्स मैंने वहां शेयर कर दी थी, अगर आप लोगों के पास होंगी प्लीज रन दिस. Okay, I have train X and train Y, test S and test Y. Okay. So guys, please let me know if you are done till this place.
ओके, तो आप अगर वहां तक कर चुके हो तो प्लीज डू दिस. आई हैव पिंग्ड यू. Please do this and then see the first value, how that is transformed. So we have divided each value by the maximum value. And because we need float, so we converted it to floats. Float value मतलब decimal के बाद आपके पास 0.000 something. Guys, please ping me if it's done. Okay, perfect. Then let's define the model. Please define the model. You can change these values. You want lesser filters, you want the filter size to be 5 by 5, 7 by 7. You want a pooling filter to be of different size. In pooling filter also you can specify by comma the strides. Okay, कि आपको एक एक का स्ट्राइड करना है, दो दो स्ट्राइड करना है, तो पूलिंग लेयर में आपको बता सकते हो. Okay, then we are doing flattening because we have to convert this 3D or 2D data whatever we have into 1D. Then we again apply batch normalization and do that. So I'll tell you what this batch normalization is. Okay, so what you have done is you have built a model as well. So by running this particular thing, so let me check your model dot summary. What happened? Okay. So I need to call this, right? So जो फंक्शन बनाते हो आपको वो फंक्शन एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, राइट? तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉलिंग दिस. देखो पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, इसको समझो. मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल को मैंने सीधा सीधा एग्जीक्यूट ना करके एक फंक्शन बना दिया फॉर दिस CNN मॉडल. लेकिन फंक्शन अभी सिर्फ डिफाइन हुआ है, फंक्शन रन नहीं हुआ है. तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है डिफाइन द मॉडल. So I need to run this function first. So let me run this function first, which is like define model, and then I'll run this because उससे पहले उसको मॉडल पता ही नहीं क्या है, उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. Okay, मेरा मॉडल बन गया है. Now I'll say model dot summary. What happened? Model dot summary. Okay, got it. अब देखो दूसरा एरर क्या है गाइस. बिफोर आई टेल यू, कैन एनीवन टेल मी ये एरर क्या है? मैंने फंक्शन तो रन कर लिया, जरूरत ही नहीं है. बात ये है कि ये फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग. तो अगर कोई अपने घर में से बाहर कुछ फेंक रहा है, मतलब फंक्शन एक घर है जिसके अंदर से बाहर क्या फेंका जा रहा है? मॉडल. मॉडल को घर से बाहर रिटर्न किया जा रहा है, लेकिन कोई कैच ही नहीं कर रहा उसे. कोई कैच तो करो, वो कुछ फेंक रहा है बाहर. तो भाई ये जो फंक्शन है इसको कहीं पे कुछ कैच तो करवाओ.
तो किसी वेरिएबल में इस मॉडल को जब रिटर्न हो रहा है किसी वेरिएबल में लोड करवाओ, mdl में करा दिया मान लो, तो अब मैं कहूंगा mdl.summary नाउ इट्स रनिंग। अरे अच्छा मैंने ये चलाया नहीं शायद, सॉरी। हाँ अभी देख रहे हो गया ये। सी दिस गाइस, गेटिंग इट? अदिति, नितिका, राहुल, जिशान, guys, did you get it? Please ping me. If you didn't get it, I'll repeat it. Gulzar. I am saying ये मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं। अभी तक क्या होता था, आप सीधा उठाते थे और ये एज इज रन, पिंग मी, लॉजिकल थिंग्स को फंक्शंस में ग्रुप कर दो। तो आपने डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया, तो मैंने उसे कॉल किया, कॉल भी किया तो उससे कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो मुझे रिटर्न भी करना था, तो मैंने रिटर्न भी किया। रिटर्न करने के बाद मैंने mdl.summary प्रिंट किया, तो मेरे पास ये टोटल, अब देखो कितने से पैरामीटर हैं, सिर्फ इतने से पैरामीटर जो आपके मॉडल को लर्न कर, ऑब्वियसली राइट। पूलिंग लेयर में क्यों पैरामीटर होगा, वो तो मैक्स या मिन या एवरेज लेयर डोंट नीड अ पैरामीटर, फ्लैटन लेयर डोंट नीड अ पैरामीटर, convolutional needs the parameters, batch normalization also needs it, which is there. So if you look at 3 by 3 multiply by 32, right, कितना होता है, लगा लो हिसाब, 288 और ये 320, राइट। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो आपकी 9 लेयर्स हो गई, हर लेयर में आपके पास 9 वेट्स और एक क्या होगा, कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? दिस इज वन लेयर, 9 वेट्स, मतलब ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर है और उसके अंदर नोड्स हैं, आप अब मान के चलो 32 नोड्स हैं उसके अंदर, राइट। यस, सो 32 फिल्टर या 32 नोड्स हैं इसके, जिनके थ्रू आपका डेटा पास हो रहा है, राइट, कनेक्शंस है। तो बायस हो गए आपके पास, तो हर लेयर में टोटल 10 चीज हो गई, 9 + 1 विच इज बायस, तो टोटल 320। एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बार क्या होता है जब ऑनलाइन एग्जाम देते हो एमसीक्यू वाला, उसमें इमेज आ जाती है, आपको इस तरह की इमेज दिखा दी जाएगी और यहाँ पे कुछ वैल्यूज को क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है, जैसे मान लो इस लेयर को क्वेश्चन मार्क कर देंगे और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। वैसे आप सोचोगे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट इट इज वेरी इजी, ओके। या वो ऐसा करेंगे, वो इसको 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 हटा देंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे सिर्फ इसकी वैल्यू, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछेंगे नहीं, पूछेंगे ये, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले इसे कंप्यूट करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप ये कंप्यूट कर पाओगे। गेटिंग इट? अगर मैं रिव्यू ले रहा हूं तो मैं आपको ये शीट दे दूंगा, उसमें से मान लो मैंने ये सब हटा दिए और आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कैलकुलेशंस अप टू टेल मी दिस, ओके। और ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं which comes in to check your detailed understanding, okay। तो अब हमें पता है कि भैया 320 ये हो गए, उसके बाद there is this batch normalization layer which is separate, don't worry about it. Pooling layers don't have any weights, whether max pooling, average pooling, flatten does not have, but now you all can calculate this, right? Can anyone tell me इसका वैल्यू क्या आया, क्यों आया ये? इस डेंस लेयर में जिसमें कि 100 न्यूरॉन्स हैं, इतना ज्यादा वेट्स क्यों आए हैं? Gulzar says this multiply by this plus this. Yes, Gulzar, absolutely correct. Let me compute it. Yeah.
then again we have a batch normalization layer, and उसके बाद आप ये भी निकाल सकते हो कि क्यों इतने वेट्स आए. Okay, so total if you see only 0.5 million weights, and that's too even because of the dense layer. So that's the biggest benefit of convolutional layers. You train too few weights. So the important thing for you is to make sure you have multiple filters in each layer, each convolutional layer. नितिका अभी मैंने बताया ही नहीं बैच नॉर्मलाइजेशन. I'll come to it. वो अभी मैंने बताया ही नहीं है. और but you can skip that layer also. Okay, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर हमें तब चाहिए होती है जब बहुत ही डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं हम. But yeah, it's one of the very important layers. But yeah, keep it side for that being. मतलब ऐसा नहीं है कि बैच नॉर्मलाइजेशन CNN में यूज होता है. ये आप MLP में भी यूज कर सकते हो, या आप RNN में भी यूज कर सकते हो. बैच मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं. ठीक है, पूलिंग में तो कुछ करना ही नहीं है. कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों? पूलिंग में क्यों नहीं मैं बोल देता कि जैसे कॉन्वोल्यूशन लेयर में मैंने बोला 64 अलग अलग फिल्टर्स, यहाँ क्यों नहीं मैं बोल रहा कि 32 अलग अलग फिल्टर्स? सारे फिल्टर्स पूलिंग के सेम क्यों है? मतलब एक ही फिल्टर क्यों है यहाँ पे? कैन एनीवन टेल मी? मैक्स पूलिंग में क्यों नहीं मैं बोलता कि जैसे यहाँ 64 अलग अलग फिल्टर थे? कैन एनीवन टेल मी? No, that's fine, Gulzar, but there is a reason. बिकॉज पूलिंग का कॉन्सेप्ट एक ही है. पूलिंग में कोई वेट्स तो है नहीं जो मॉडल को लर्न करने, राइट? जब कॉन्सेप्ट ही सेम है कि भैया आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है उस जिस फिल्टर पोजीशन पे आप हो उस समय, तो मैक्स मतलब मैक्स ही लेनी है. तो अलग अलग फिल्टर रखने का क्या फायदा? लेकिन कॉन्वोल्यूशनल में अलग अलग फिल्टर मतलब कोई फिल्टर हॉरिजॉन्टल चीजों को समझ रहा है, कोई वर्टिकल समझ रहा है. सर जो MDL वाला कमांड था आपकी नोटबुक में, कौन सा वाला? MDL समरी की पैलेस में जो ये हाँ सर की यही क्वेश्चन था कि MDL से वो ठीक कैसे होगा? जो पहले एरर बता रहा था वो MDL से कैसे सॉल्व हुआ? तो यही क्लियर नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड. Let me explain you, okay, in a simple way. I am defining a function, say sum. Okay, मैं उसका नाम डबल एम
but that's not the right thing. Because when some function returns a value, you actually need to save it somewhere. You need to save it. Okay. So when you save it, and then you say, okay, print a, you get the value of a. So that's what I'm doing. I'm saying, oh, my function is returning something, and if it's returning, I should save it somewhere. So I'm saving it in some variable, say x, and then I'm saying, oh, return me x. That's what I'm doing. So whenever you have a function that returns anything, so you need to call that function, and this function returns you the value which you need to save somewhere so that you can use it in another computation. For example, you will say, oh, give me type of x. So type of x is an integer because you are getting an integer value. But if I say, oh, okay, do it this, I think as float or to something. ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखोगे तो ये इसका टाइप फ्लोट हो गया। अब वो मुझे 3 की जगह 3.0 रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने b को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, जो भी वैल्यू आ रही है। Okay, so Gulzar, my point is this value which is returned actually saved in the MDL. That's it. मॉडल का सारा इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल में सेव कर लिया है मैंने। That's how we actually call a function. ठीक है सर। Whenever you create a function and that function returns something, you have to save it in some variable, and that variable contains all the detail of the thing that you're returning. Okay, so that you can check this. कॉन्वोल्यूशनल लेयर की आउटपुट शेप, ये उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं, उस लेयर के इनपुट पैरामीटर्स हैं। ये आउटपुट शेप है, पहले तो ये अलग अलग पता होना चाहिए। ये उस लेयर के इनपुट पैरामीटर्स हैं और ये आउटपुट शेप है। ओके, और आउटपुट शेप क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आप यहां देखें, इस पे भी देखें, इनपुट इमेज के ऊपर मेरे केस में भी 28/28 इंटू 1 की ही थी इमेजेस, और 3/3/32 का कॉन्वोल्यूशन मैंने लगाया, तो मुझे 26/26/32 का ही तो आउटपुट मिलेगा, 26/26/32 का, राइट। बैच नॉर्मलाइजेशन लगाई उसके बाद मैंने, तो बैच नॉर्मलाइजेशन व्हाट इट डू इज, आपके आउटपुट को कुछ बदलती नहीं है वो, बैच नॉर्मलाइजेशन आउटपुट वही रखती है, बट इट डू सर्टेन इंटरनल ऑपरेशंस व्हिच आई विल टेल यू। तो दैट मीन्स कि बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इनपुट था आउटपुट का शेप वही रहता है। पूलिंग लेयर जो आपने लगाई, हमें पता है यहाँ पूलिंग लेयर लगाई, तो इनपुट इस बार ये है और आउटपुट 13/13/32 का आएगा।
तो 13/13/32 का आउटपुट आया। और ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि क्यों आ रहे हैं सब। और फ्लैटन लेयर भी मैंने आपको बताई कि ये क्यों है। इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आएगी इसकी वैल्यू, मतलब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आई थिंक यही वैल्यू आनी चाहिए। कुछ अलग आ गया तो अलग, हाँ ठीक है, तो यही वैल्यू आ रही है। तो वी आर क्लियर, राइट। ओके, अब मैं थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन लेयर क्या होती है? पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन लेयर आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी न्यूरल नेटवर्क में यूज कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि आपकी लर्निंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि क्या क्या प्रक्रिया ऐसी हैं जो आपके ट्रेनिंग टाइम को घटा सकती हैं। बहुत सारी चीजें। आप अपनी स्ट्राइड्स बढ़ा सकते हो, आप नंबर ऑफ फिल्टर्स घटा सकते हो, आप साइज ऑफ फिल्टर घटा सकते हो, राइट, नंबर ऑफ लेयर्स घटा सकते हो, लर्निंग रेट बढ़ा सकते हो। अगर लर्निंग रेट बड़ा होगा तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन वो सही जगह कन्वर्ज नहीं होगा, वो गड़बड़ गड़बड़ कन्वर्ज होगा, वो ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमल लर्निंग रेट की बात होती है, राइट। और वही एक चीज आती है बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन करने से भी हमारा फास्टर कन्वर्जेंस हो जाता है। योर मॉडल मतलब ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस को ये हेल्प कर फास्टर कन्वर्जेंस में। इसका मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली सी चीज है भाई। देखो हमने क्या किया, हमने ये इनपुट ले, ये मेरी सबसे पहली लेयर थी मॉडल की, राइट, जिसको मैंने इनपुट दिया था। लेकिन मैंने इसको इनपुट देने से पहले उसे नॉर्मलाइज किया था, चाहे मैंने उसको मिन मैक्स स्केलर किया या मैंने उसको 255 से डिवाइड कर दिया सब वैल्यू को, तो उनके बीच में मैंने कर दिया था। तो मतलब वो भी तो नॉर्मलाइजेशन ही थी। और उसको करने का कारण भी यही था कि सारी वैल्यूज एक सिमिलर रेंज में आ जाए, सारी पिक्सल वैल्यूज 0 से 1 की रेंज में आ जाए। एक्चुअली उससे हमारी एक तो जो कन्वर्जेंस वाली प्रोसेस है वो फास्टर हो जाती है, मॉडल लर्निंग प्रोसेस की सारी वैल्यूज एक प्रॉपर रेंज। प्लस देयर आर सम अदर रीजंस। तो जब मैं इनपुट के साथ ऐसा कर सकता हूं, तो क्या मैं जो इंटरमीडिएट लेयर्स के आउटपुट आ रहे हैं वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। हो सकते हैं कि वो वैल्यूज जो आ रही हैं दे आर नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो कैन आई पुट अ लेयर, separate layer which takes care of normalization on the output of each layer? So for example, इस convolutional layer का जो भी output है before it goes into the pooling layer, can I put a normalization layer in between that will keep my dimensions as is? मतलब अगर 3x3 का आपका फिल्टर है तो आपके 9 ही वेट्स रहेंगे, राइट, 9 ही वेट्स आपके रहेंगे, वेट्स में आपके कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। बट जो डेटा मेरा नेक्स्ट लेयर को पास हो रहा है, कैन दैट बी नॉर्मलाइज्ड? डेटा जो नेक्स्ट लेयर को पास हो रहा है मतलब ये जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं, इन वॉल्यूम्स के अंदर जो वैल्यू है उनको हमें नॉर्मलाइज करना है। ओके, वेट्स को नॉर्मलाइज नहीं करना है हमें, इधर जो वेट्स है उनको नॉर्मलाइज नहीं करना, ये जो आउटपुट है उसको नॉर्मलाइज करना बिफोर इट गोज इनटू दिस लेयर। Because I normalize this, which was my original image. So can I normalize this? Can I normalize this? Can I normalize this? This is known as batch normalization. Normalizing the output of each layer before feeding it into the next layer. So you are not changing the number of records, you are just changing their values. So that's why जो convolutional layer की dimensions थी वही batch normalization की output dimensions है, जो output shape है. Getting it? So you are applying a normalization, batch normalization. So here we actually apply standard scaling, x minus of mean divided by standard deviation.
So that's the approach which is applied here. The benefit of that is you converge faster to the global minima. So that's what batch normalization is, and this can be done even in RNN. This can be done even in MLPs. Anywhere you want, you can do that. But primarily, we also need to understand that that's the applied here. That is you never decide the number of layers. What I mean to say is, it all depends upon the computation power you have, and B, the accuracy that you are getting with the lower layers. तो मतलब आपने एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज किया एंड आपका पर्पस बड़ा ही सिंपल था कि आपको सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आइडेंटिफाई करना था. आपने मल्टीपल फिल्टर्स यूज करके एक काम कर दिया, कैट की कुछ थी, और आपने फिर एक्यूरेसी चेक की, आपको लगा हाँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, यू आर गुड विद इट. बट आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दिस. You use more convolutional layers, but see if it's becoming accurate. So always starts with one layer, always start with one layer, and like one convolutional layer, one pooling layer, then one flattened layer and one dense layer. Bare minimum you need these four. Right? Bare minimum you need this, which is your output thing. You need like this output, matlab this is one layer and this is another layer. You can use at least these two layers and one of the dense layers and one of the flattened layer, only 4, and build your model and see. Then you see, oh no, my performance is not good, I still have GPUs and all. Or even if you don't have GPU, you start increasing. So you have to go on optimizing it. Okay. Plus it also depends upon the kind of problem. If your problem is very complex, where you not only want to identify an image, but you want to see whether that person is smiling or not. Like you also want to see whether that person is smiling or what is his face impression. So I want to see, oh, this face is Rahul, but also whether he's smiling or not. And now which color of dress he is wearing, right? And then along with Rahul, you see, oh, there are multiple friends also in this image. So your problem starts to become complex. Then you have to start including more and more layers. And also ये और complex होते चले जाएंगे. But the good thing is there are already standard architectures, like I told you, right? LXNet, VGG and all. So you really don't need to build things from scratch now in the world of CNNs. A lot of research is already being done. So if you want, you can read about these different architectures which are already built. LXNet architecture, 5 convolutional layers, 3 max pooling layers, 2 batch normalization layers, 2 fully connected layers and 1 softmax layer. So मतलब 2 FC layer and 1 output layer. तो that's why they say, okay, output layer के अलावा आप एक dense layer और use कर लो या 2 कर लो. तो then you need to read कि भैया ये करना क्या चाह रहा है.
each convolutional layer consists of convolutional filters and non-linear activation functions like ReLU, leaky ReLU, something like that. Okay, so these are already there. The first CNN to win the ImageNet. So ImageNet is like a collection of lot of images, and there is a competition that happens to process of convolutional filter linear actions more accurately. So AlexNet was the first CNN to win the ImageNet competition. So I'm saying these are standard architectures available. You guys can read them, like what they are, what is the particular problem they are trying to solve. ImageNet contains millions of images. Like we are saying MNIST data. Instead of using MNIST data, you can use ImageNet data. Okay, ImageNet also provides you millions of images that you can download. There are a lot of images here, and you can do a lot of study on that. Similarly, those who want to do RNN, more into NLP, there is WordNet. Like we have WordNet, ImageNet. These are collection of content that you can download for your analysis, building your natural language or image related models. Millions of data sets are available to go through. Okay, so this WordNet, ImageNet are that kind of the things. I'm just pinging you. You guys can go through it in your free time. Okay. सर एक मिनट, हाँ गुलजार बोलो। क्या अभी आपने AlexNet के साथ कोई VGG बताया था? अभी क्या बताया था मैंने? AlexNet के साथ कोई VGG बताया था आपने? हाँ बिल्कुल बताया था। AlexNet के अलावा there is a VGG model architecture also. So if you see, these are the ones: VGG, residual networks, inception models, and exception model. These are all the research going on. You guys can study about these. These are specific models which they are different shapes. So the image that they are taking is 224 by 224 into 3. So if you look at, so again, very simple. What's happening here is like what we were talking about is like a CNN, standard CNNs, right? जो हम बना रहे हैं वही ये है, बट इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक पर्टिकुलर को सॉल्व करा इन लोगों ने और अवार्ड जीता, तो उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो अगर आप देखें, अब आपको सारी लेयर्स के बारे में पता ही है। So how these guys are working is, this is your image, and then it applied a certain filter on top of it. Then you got this thing. So 224 by 224 into 64. So let's check what this guy is doing. So you get a give an input, you get a convolutional layer of 1 by 1, convolutional layer of like this is first convolutional layer, second, then pooling, then again convolutional layers, pooling, then multiple convolutional layers and pooling. तो ये 16 जो है, let's count if this is 16. Okay. इक्कीस हो रही हैं वैसे, बट एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से. So you will get to understand these. बट कुछ भी इसमें ऐसा अलग से नहीं हो रहा है.
It's just you have to read about these. And what they are showing you is he is using this is your first this is your first convolutional layer. This is your first convolutional layer, then another convolutional layer where he is using ReLU. Okay, he is using ReLU. Then over here he is using max pooling. Then again ReLU and max pooling. Then again 3 ReLU and max pooling, like that. And ये fully connected are your dense layers actually. These are your 3 dense layers but fully connected. And this final is also a dense layer, fully connected dense layer, but softmax is the function that is being used here. Okay. So that's what is being done over here. So if you're interested, you can read more about each and every layer, what's happening here. So you are passing the RGB image. It's going through a convolutional layer where filters were used in a very small receptive 3x3. So you need to understand that it's giving a 3x3 ka filter, smallest size to capture the notion of left, right, up, down, center. Matlab, ultimately to identify the edges and the locations. This is the smallest filter that we actually pass in. But it's also passing a 1x1 convolutional filter. Okay. So, and it's also giving convolutional strides of 1 pixel. And the spatial padding input is such that spatial resolution is preserved after the convolutional. So it's doing a certain level of padding. The padding is like of 1 pixel. Okay. Padding is of 1 pixel. 3x3 convolutional layer, as in 3x3 का filter है आपका. Then again the pooling layers. It's let me tell you. See, this is your input image, right? And this is your output from the first convolutional layer. Definitely, you can see that okay, Rahul 64 filters यूज किए गए होंगे उस लेयर में, इसलिए 64 ये वैल्यू आई. बट अब मेरा क्वेश्चन है कि ये 24x24 कैसे आ गया, राइट? 24x24 की डायमेंशन कैसे आ गई, मतलब 224 224. तो मेरे फिल्टर की क्या डायमेंशन रही होगी, राइट? तो कैन आई डू रिवर्स इंजीनियरिंग टू आइडेंटिफाई दैट? कैन आई डू रिवर्स इंजीनियरिंग एंड आइडेंटिफाई? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग तो हम कर लेते हैं. तो definitely we can do. We know that Rahul n minus of f plus 1 is equal to 2 2 4, but your n was Rahul also 2 2 4, like 2 2 4. These two cancels out each other, so f is equal to 1. Definitely we can do v minus plus is equal to, but okay, but मैं कहता हूं नहीं, वो 1x1 नहीं था. गाइज यहां तक तो क्लियर है ना, मैं 1x1 का फिल्टर कैसे पहुंचा? क्योंकि स्ट्राइडिंग है ही नहीं यहाँ पे.
मतलब लेट्स से वी आर नॉट डूइंग स्ट्राइडिंग, अल्टीमेटली तो मुझे सब पता होना चाहिए कि स्ट्राइडिंग भी हो रहा है कि नहीं, बट यहाँ स्ट्राइडिंग हो ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ हो रहा होगा तो वो अलग है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान के चलते हैं कि स्ट्राइडिंग नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा तो 1 by 1 का फिल्टर भी नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरा फिल्टर जो है वो है 3 by 3 का। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। n plus 2p minus of f plus 1 is equal to 2 to 4. Correct? Getting it? Now n is also 2 to 4, so that means 2p minus of f plus 1 is equal to 0. Okay? Getting it? That's equal to 0. So that means if I am saying this is 3, right? So minus of 2, 2p equal to 0. So p is equal to 1 आ गया इससे कैलकुलेट करके. So that means you have done, Rahul, a padding of 1. So we have to do padding on all the side of this layer, so as to preserve the edges information. On the edges I can have important informations of the image. Okay, so if you look at what this guy is saying, so this guy Alex net thing is stride is of 1, which is okay, leave it, but the spatial padding is done. So if you look at the spatial padding of convolutional layer in input such that the spatial resolution is preserved after the convolution, padding is 1 pixel for 3 by 3 convolutional layer. So we are doing spatial pooling also. So when you read these terms you will get it. 3 FCs follow a stack of CLs. So these architectures are no rocket science, it's just what they thought of, they did it, and that won the competition at that time. Okay, and just telling you further the inputs and the layers that you are passing through. Okay, so VGG नेट कहाँ से आ गया? अच्छा, हम VGG नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एलेक्स नेट की नहीं, हम VGG की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये VGG आपका आ गया, बट VGG के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ बताए गए हैं कि भाई पेनफुली स्लो टू ट्रेन and the network architecture weights are quite large. It took too much of memory, right? So there are other networks which are better, SqueezeNet and Google Linet, etc. So again, if you see, it's normally talking about
a batch layer after a batch normalization after the first convolutional, and maybe just before the final output you can put the functions. But yeah, this network itself is further quite big, using some global average pooling and all. Max pooling 7x7 ka convolutional. Okay, so this is ResNet 18 architecture. Go through it. There is no end to this field. So just go through it. Okay. About this more about batch normalization, but the benefit with batch normalizations are it speeds up the convergence for the global minima by bringing the values in a particular range. So ultimately gradient descent को बहुत मदद मिलती है अगर आपका डेटा एक defined range में हो तो. Okay guys, so after that the next step that you guys can do is just this much. So I'm doing that. So I'm not going into this 128 and 400. I'm leaving it to you. Just try to read about this कि batch normalization layer जो काम कर रही है उसमें 128 और 400 ये क्यों आ रहे हैं. You will get it. ये सब simple है, बहुत simple concepts हैं. Go through it. Okay. Now the final thing that you have to do once your model is built, you can say okay mdl.fit your train x and train y, epochs 10, batch size this, validation data which we already have, and verbose let me put it 1, and let me comment it out. What happened? Okay, indentation. Train next and y is not defined. Okay, I think it's small y. It's also small y. Okay, perfect. Input 0 of the layer sequential 9 is incompatible with the layer this. Minimum dimension 4, found dimension 3, full shape received 3, but this twice. So guys, before we go into this, I'll resolve it. Please follow along. I don't want you to guys to left behind. Please try this. We built the model. Now we are just going to fit it. Just check if all of you are getting the same error. Try to resolve it on your own, please. Now, consider this is the last day. If I'm not there, how will you resolve it? Value error, input 0 of the लाइन लेयर कहाँ है? मॉडल है सिक्वेंशियल लाइन. अच्छा, मॉडल का नाम है सिक्वेंशियल लाइन. उसकी जो इनपुट लेयर है उसकी शेप गड़बड़ा गई. कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, प्लीज रिजॉल्व. आई वांट यू टू रिजॉल्व. इज इनकम्पैटिबल विद द लेयर, एक्सपेक्टेड मिनिमम फाउंड डायमेंशंस 3, फुल शेप रिसीव्ड इज 32 28 28. ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है. वो मुझे कह रहा है कि भैया आपका ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई गड़बड़ है. तो मैं देख लेता हूँ मेरा ट्रेन एक्स है क्या. मेरा ट्रेन एक्स है ये. तो एक बार देख लेते हैं ट्रेन एक्स भाई क्या है. तुम पहली बात तो मैंने मॉडल को ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रेन एक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रेन वाई देख लेते हैं. हाँ, तो यहाँ गड़बड़ हो गई. जो ट्रेन वाई में पास कर रहा हूँ वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है. गेटिंग इट? वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है. दिस ऑल्सो नीड्स टू बी अ वेक्टर गाइस.
Remember in natural language processing, output was also a word, the next word, but we also converted that, like the outputs, the training target vector, as a vector using two categorical, because this also needs to be 0 1 0 1 0 1. So we need to convert this because मॉडल का जो आउटपुट है वो कुछ वेक्टर की फॉर्म में आ रहा होगा और एक्चुअल आउटपुट आप कह रहे हो कि ये न्यूमेरिकल 5, मॉडल को तो नहीं पता न्यूमेरिकल 5 को आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो मॉडल का आउटपुट है और जो 5 को आपको जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दोनों आपस में कंपेयर हो सके मैथमेटिकली. तो व्हाट आई विल डू, I will do very simple thing. I will use two categorical function to do that. Yeah. So sorry. Train of y plus output classes are between 0 to 9. So it's like 0 1 2 3 4 5. 5 पे 1 कर दिया, 6 7 8 9 बाकी सब पे 0. This is like one hot encoding जो हमने वहां पे भी की थी NLP में. Remember guys, is it clear? Model does not understand 5, model needs data in this form. That's why the ऊपर वाला error. Guys, yes or no? Okay, Tanya. So with that in mind, let's change our target over here. Small y की जगह let's make it capital Y. But before that, let me also send you these error. Errors are your biggest friend in the learning phase of the life. Whether it is study or in general. Okay. So let's see now. फट गया अभी भी, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी हमने पहली गलती सही कर रही कि ये 5 नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. ठीक है, ट्रेन ऑफ वाई. तो डिड आई पास इट करेक्टली? ठीक है, तो मैंने ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई उसको पास कर दिया और बैच साइज जो भी 32 का है. ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं? रिकॉर्ड्स तो बहुत है. ठीक है, हो सकता है मैं और भी कुछ मिस कर रहा हूँ. डू इट वन बाय वन. हाँ मतलब करण, solve it and let me know if you are able to solve it. I'll
तो मेरे कॉलम आ गए, तो मैंने उसको 10 कॉलम भेज दिए, हर वैल्यू के लिए 10 कॉलम भेज दिए। ठीक है, हर वैल्यू के लिए मतलब हर नंबर अभी मेरा 10 कॉलम से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और वो वैल्यू भी फ्लोट है। तो इनपुट लेयर 0, इनपुट 0 of the layer sequential line is incompatible with the layer, expected minimum dimensions 4 and found the dimensions 3, full shape received is this and 28 by 28। ठीक है, 28 by 28 के 32 उसको इनपुट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। 3 by 3 का मैंने फिल्टर बोला, 28 by 28 का ये बोला, मैक्स पूलिंग मैंने यहाँ की, वहां मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन किया, ये मेरी इमेज आ गई। अगर मैंने 3 by 3 का फिल्टर किया, ठीक है। वैसे मैंने उसको नॉर्मलाइज्ड इनपुट नहीं पास किया है, बट एनीवेज दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट को कह रहे कि भैया रीशेपर, लेट्स चेक दिस। हाँ, so guys just try yourself, Google it if you want, because I want you to solve it. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने बोल। किसी D12 के बारे में हमें हमसे कुछ गो थ्रू करने को कहा था, D12 वाले लिंक, किसी लिंक के बारे में सर। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी हम CNN कर रहे हैं, तो CNN के बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। अब वो कहीं पे भी पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर पर कि कौन सी साइट? so you can read about the LXNet, VGG and this ResNet and all here. Okay, for example, if you are interested in the original paper, this is the one you can read. Okay, from Yan Kim and Yoshua Bangio, you can read about this. Here how they have applied the backward propagation and the gradient descent, so you can read about these things.
the model, you have X and Y. Initially, the Y that we sent was, there was a problem, right? The Y we sent was 1, 2, 3, 4, but it should be a vector. So we converted it into it by one hot encoding. The another problem which was there was, I pinged you, right? This error says I need 4 dimensions. If you look at the error, I need 4 dimensions. You sent me 3 dimensions. If you look at this, right? I need minimum dimensions needed were 4. What I'm telling the model, see, what I'm telling the model is, this is the input shape, right? I'm telling model that my input shape is 28 by 28 by 1, right? So since I am telling the model that this is my shape, I should be in that shape. So let's go back. See, my shape is 28 by 28. 60,000 रिकॉर्ड्स हैं, बट हर एक रिकॉर्ड की शेप क्या है, इतनी है, 28 बाय 28 का वेक्टर है, बट मैं वहां बोल रहा हूँ 28 बाय 28 बाय 1 का, तो 28 बाय 28 बाय 28 का 1, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ. There is a reshape function, right? We already use in the reshaping the arrays, numpy arrays and all. So we can do that reshape. So you can reshape everything. अब मैंने बस 0 को reshape किया था. So मतलब नहीं अरे मतलब ये नहीं लगाना है आपको, मतलब जस्ट ये तो एक लूप के ऊपर चलेगा, बट या यू कैन डू दिस. वेट, तो अल्टीमेटली आपको उसको रीशेप करना है. So I'm saying, okay, reshape this, like train X, reshape. Let me check the data after shaping it. This is my data. Let's check the data. The data at the 0th position, what it looks like. The data looks like this. Okay, so now every record is of the shape this 28 by 28 by 1, which is good. Okay.
So we will complete this. Okay, today itself we are done with this. Now my TensorFlow is failing, creating variables on the non-first call to a function which is decorated with this. Take care. Creating the variables on this. Perfect. Guys, please try to Google that error and you if you are getting the same error. Meanwhile, I'm trying to resolve it. So I think I have found the issue, but it's just running. And while please try to resolve on your own. Check what could be the possible issue, and then I'll tell you. It will take some time. It's training the model. If you guys want, take a break. We will put another 15 minutes and then we are done. Take a break, come after 5 minutes. Meanwhile, take a 5-10 minutes break if you want.
So guys, those of you who try to Google it and fortunately lands on this particular page. So let me tell you what this error actually is trying to say. So first of all, if you look at the error is saying tf.function decorate. Okay, tf.function, which is one word, decorated function. So means there is a function which is decorated with this. So means a function which is decorated with this thing. It is trying to create certain variables. Okay, it's trying to create certain variables which it's not allowed to. Now the question is, what is decoration? So this मैंने नहीं बनाया है, टेंसर जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसके अंदर केरास कुछ टेंसर फ्लो के फंक्शंस को चला रहा है जो ग्रेडियंट डिसेंट करना चाहता है फॉर एग्जांपल, बट वो ग्रेडियंट डिसेंट करने से पहले ही फट रहा है. क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा पास किया है उसकी जो शेप है उसमें उसको इश्यूज मिल रहे हैं. शेप मतलब डायमेंशंस, जिसकी वजह से वो फंक्शंस नहीं बना रहा है, मतलब उसको कुछ काम करना है जो वो नहीं कर रहा है. ठीक है, देयर आर some optimizers like slow optimizer, fast optimizer, like Adam optimizers with different learning rates, right? Slow optimizer का learning rate definitely कम होगा, fast optimizer का learning rate ज्यादा होगा. ये TensorFlow के अंदर का कोड है. So Gulzar, it's just I need 5-10 minutes, but if anyone wants, guys, you can now disconnect. We are done with the course. It's just I want this final program to run. I will definitely put this code on the GitHub, but I want you to wait if you want. Just this fitting is the last thing that is left, and you will not learn this thing anywhere. Resolving the error real time means I can resolve it and share, but those who want, they can stay. Okay, so guys, those who want, they can leave. It's perfectly fine. Means we are done. It's just these two data sets we have to prepare properly. So I'm explaining you. Okay, so now but there is nothing new which I'm going to tell. So guys, please, those who want, they can drop. It's perfectly fine. So what I'm saying is this is internal TensorFlow code which is running the gradient descent process. So I'm just showing you that. ओके, तो हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं, जो भी हम इनपुट भेजते हैं मॉडल को, जो भी हम इनपुट भेजते हैं वो एक्चुअली जो मैट्रिक्स होते हैं हम उन्हीं को टेंसर्स कहते हैं. तो अल्टीमेटली दी फंक्शन, दिस फंक्शन इज से प्रोसेसिंग अ वेरिएबल
which variable can be my input data, but this input data should be in the form of a matrix, and that's what TensorFlow consider as a tensor. So tensors are nothing but the input matrix, और even अगर ये input matrix एक convolution layer से पास हुआ का टेंसर होगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हर लेयर के थ्रू क्या फ्लो कर रहे हैं आपके टेंसर्स. सो दैट्स व्हाई इट्स टेंसर फ्लो. योर टेंसर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, एंड टेंसर्स आर नथिंग बट द वेक्टर्स or matrix. Okay, so that's what this is saying. So I want you to be aware about the error. So I'm again pinging you the error. The error says creating ये फंक्शन को, मतलब मैंने जिस फंक्शन को कॉल किया है वो कुछ वेरिएबल्स बनाने की कोशिश कर रहा है और इनके लिए वो अलाउड नहीं है. मतलब मैं किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं और उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करना अलाउड नहीं है. ओके, मतलब, और या फिर मैं उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा हूं और डायरेक्टली कॉल करना चाहिए, कंसिडर लाइक दैट. सो इट्स लाइक सिर्फ फर्स्ट कॉल पे ही वो वेरिएबल्स बनाएगा. अगर आप एरर को सही से पढ़ो, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे ही वो वेरिएबल्स बनाएगा, लेकिन मैं फर्स्ट कॉल नहीं कर रहा हूं, नॉन फर्स्ट कॉल कर रहा हूं. मतलब या तो मैं उससे पहले उसे कॉल कर चुका हूं या फिर उसको कॉल करने का तरीका ही कुछ और है, मैं जो तरीका यूज कर रहा हूं उसके अलावा. ओके, सो लेट्स सी दैट. तो जब हम यहां पर आए, ये कर क्या रहा है, हाँ अभी एनीवेज ये चल रहा है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें दो गलतियां तो पहले ही दिख गई कि आप जो डेटा पास कर रहे हो, ओके, अप्रोच द प्रॉब्लम इन अ स्मॉलर ऑर्डर. पहले हमने ट्रेन वाई देखा, क्योंकि इशू इन्हीं दो चीजों के साथ हो सकता है. हमने देखा ये, हमें पता लगा इसमें इशू था, हमने उसको टू कैटेगोरिकल कर दिया. फिर हमने देखा कि भाई इसमें इशू हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने इनपुट शेप जो दी थी उसमें प्रॉब्लम था. जब हमने ये सब भी कर दिया उसके बाद भी वी आर गेटिंग दिस एरर, राइट? सो फॉर दैट I did some change, it's running. 1 minute. Guys, please take a break. Those who want, it will take 5 more minutes. सर Yes. सर ये जो एरर है डेकोरेटर, तो ये जो फंक्शन है डेकोरेटर फंक्शन है. 1 मिनट. मतलब क्या है कि आपको उसके लिए ये एरर देखना पड़ेगा. 1 सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर आप आएंगे तो अब यहाँ पर मुझे नहीं पता है वो फंक्शन कौन सा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रेस बैक करना पड़ेगा. ट्रेस बैक की प्रोसेस ये होती है जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि ये जो एरोज जहां आ रहे हैं आपको उन फंक्शंस को वेरीफाई करना है. ठीक है, तो अब हम एक एक करके वेरीफाई कर रहे हैं. हम पीछे जाते हैं तो वेयर वी लैंड इज, वी लैंड ऑन दिस डेफ फंक्शन डॉट पाई. देयर इज सम ईगर एग्जीक्यूशन. सो ईगर, पाइथन में एक मोड होता है ईगर एग्जीक्यूशन. अब ईगर एग्जीक्यूशन मोड में वो चीज नहीं चल रही है. क्या नहीं चल रही है? वो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है पाइथन का जिसके अंदर प्रॉब्लम है, उसके भी अंदर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है ट्रेन फंक्शन. तो if you go further, so this is one of the method. Okay, so it may so happen that I have to open definitely this code
if you want, let me open this code. इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन so this is the program which failed, okay, पीछे in the Python TensorFlow Keras में there is this training.py which failed, so it's actually doing training, तो उसने ये function call किया है पीछे से और वो फट गया. So if you see here, I'm telling you annotations. There are annotations, right? At the class, this is one of the annotation, but this annotation is applied on the class, not function. So there are class level annotations and function level annotations, Nitika, जिनको हम decorations कहते हैं. अगर ये word बिल्कुल नया हो आप लोगों के लिए, तो there is something known as Python decorators. So there is this Python decorators. You can read about these. मतलब इससे पहले कि मैं आपको डेकोरेटर्स वगैरह बताऊं, you will see this, right? There are @class method, @synchronized. ये मतलब कोई भी फंक्शन जब आप बनाते हो, आप उनके ऊपर कुछ स्पेशल ये एनोटेशंस दे देते हो. इनसे क्या होता है, उन फंक्शंस के कामों में स्पेशलाइजेशन आ जाती है. मान लो एक फंक्शन है जो ऑपरेशन करता है, एक रोबोट है जो ऑपरेशन करता है. आपने उसके ऊपर लिख दिया @brain फॉर एग्जांपल, मतलब अब ये फंक्शन ब्रेन सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट है. फिर आपने उसके ऊपर लिख दिया से पैरेलल, मतलब ये रोबोट एक बार में मल्टीपल लोगों के ऑपरेशन कर सकता है. लेकिन आपने लिखा सिंगल, तो वो एक बार में एक ही बंदे का ऑपरेशन करेगा, एक से ज्यादा का नहीं करेगा. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. डोंट थिंक कि ऐसा पैरेलल या सिंगल कोई एनोटेशन होता है. मतलब उस फंक्शन को उसके अंदर तो ये लिखा है उसे करना क्या है, कि उसको ब्रेन को सर्जरी, उसको मतलब कोई सर्जरी करनी है. लेकिन आपने लिख दिया पैरेलल, तो क्या वो एक बार में बहुत सारे लोगों की कर सकता है या नहीं? तो आपको उसके अंदर ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो काम हैंडल हो जाएगा. आपने तो कुछ और बना दिया, तो वो पाइथन एक, में डेकोरेटर्स होते हैं. क्या दोबारा बोलो? सर पाइथन में प्री डिफाइंड डेकोरेटर्स होते हैं जिनमें कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं. पाइथन में प्री डिफाइंड डेकोरेटर्स होते हैं, बट आप खुद के भी डेकोरेटर बना सकते हो, विच इज क्वाइट एडवांस थिंग. बट 99% of the decorators you use which are like your own, okay. तो हमारी जो Python, करंट है उसमें हाँ, फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन करने के लिए, जैसे इनहेरिट टाइप. इनहेरिटेंस तो नहीं आप कहोगे, बट टू सम एक्सटेंट yes you can say it, but not exactly.
Okay, sorry, got a urgent call. Yeah, guys. Nitika, you were asking something, or is it clear? सर इट इज क्लियर। सर मेरे को वो भी नहीं समझ आया हमने रीशेप क्यों किया है। एरर तो समझ आ गया, वो डायमेंशनैलिटी 4 कह रहा था, हाँ, तो रीशेप क्यों बट किया है वो देखो। था वो तो यही था ना 60,000 इंटू 28 इंटू 28, फिर ये इंटू 1 क्यों ले रहे हैं हम? हमें ये उसका इनपुट फॉर्मेट है कि whenever you are sending a input shape, ये आपको अगर वन डायमेंशनल भी है, एज इन सिर्फ ग्रे स्केल इमेज भी है, तो आपको वन यहाँ मेंशन करना जरूरी है। अगर वो RGB है या BGR है तो यहाँ आपको 3 लिखना पड़ता है, राइट? तो अब ये वहां पे मिसिंग था। गेटिंग, हमने 28 बाय 28 की डायमेंशन तो मेंशन कर दी, लेकिन उसमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करना जरूरी है। मतलब ये आप लोगों ने पाइथन में इन जनरल भी फेस किया होगा कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप 2 डायमेंशनल एरे ही चाहिए होती है, तो आपकी जो 1 डायमेंशनल एरे होती है उसको हमें रीशेप करना पड़ता है। आई डोंट नो इफ यू गाइस फेस दिस प्रॉब्लम। 1 डायमेंशनल एरे को रीशेप करना पड़ता है 2 डायमेंशनल में, राइट? यस सर। तो बस वही वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई आई सिंपली रीशेप दैट। ओके, so let me go back to this thing @tf dot. So here I don't have anything. Def function dot py, where is this def function? So there is this. ये कुछ तो मतलब सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम या गड़बड़ हुआ है, which I am checking because this was running. I don't know what happened, but ये हो जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोग। Def function dot py. So if you look at some back propagation is happening, तो वो कुछ back propagation वगैरह को करने के लिए गया है यहाँ executor control f @tf। अभी यहाँ आया, वो यहाँ फटा है @tf dot function which is repeated in a log, frequent tracing warning threshold. Okay, ठीक है। In general, I'm just telling you कि if you look at tf.tensor, so these tensors are your vectors. It's checking the shapes of those vectors, the data type of those vectors. तो it may so happen कि मेरा data type भी ओके आई थिंक मेरा डेटा टाइप भी गलत है। मुझे अपना डेटा टाइप भी सही करना पड़ेगा। फ्लोट 32 देख रहे हो यहाँ पे, फ्लोट 32। लेट मी चेक। देन देयर इज दिस ईगर एग्जीक्यूशन, सो लेट मी चेक इट। आपको कोड में इंटरनली चेक करना पड़ेगा ये। सो लेट मी चेक माई ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई अगेन। So my train y is already in the form of floats, right? Let me check the data type. So it's already running. 1 second. So I'm checking the type of this, and I'm also checking my input, which is this thing. Okay, I think my input is not in the float, it's int. That's what the problem is. Guys, can you do this? I'm pinging you, okay? Just tell me, because मेरे end पे वो भी चल रहा है. First of all, check this and tell me what it's returning you. Float or int, or maybe array. What array matrix? What it's giving you?
Okay, float. Perfect. So we are good on this. Let's go to the next step, which is this thing. Okay. Yeah, that's what. So type for very good, Harshita. Yeah, that's what I was going to ask. So check for this. मतलब इसमें index डाल देना 0 का. So that means there we have the problem. So what we will do, we will convert it into float, like we did some this thing, right? We did this normalization, right? So what we will do, we actually didn't use this normalized data. So what you can do is, not sure, but let's check. It is still running, so maybe some changes. बट ट्रेन नॉर्म में एक चीज और आपको सही करनी पड़ेगी. अभी आप उसकी शेप देखो, 28 की है. उसमें भी आपको 1 एडिशनली ऐड करना पड़ेगा.
So the problem is my model lost its state because I restart the. Guys, please let me know what error you are getting after that training norm. Sir, non-time object is not callable. Acha, same problem. Yes. Okay, this is the last time I am trying. If it doesn't work, you guys can disconnect and I'll upload this code by making the changes. I'll email you guys what's the issue. Value error. So now I got this problem. Full shape, perfect. That is fine. This is also fine. This is also fine. So now this will run. One. These decorators, what's happening? But yeah, this is the final level of error. So we'll put it on the Confluence. The resolution for this, how you need to resolve it. Okay. So just wait. Let me tell you one thing. Yeah. So when you go to this, I'm telling you what I'm going to upload. So when you go to this CNN, guys, here I'll put a file with the name explanation. So make sure you read through that before running the notebook, which I will upload. I'll mention there the problem and the resolution detail. Okay. If there are some setting issues, I'll mention there. So you'll get a file on this path. I'm pinging you this path, save it. So in next 1 hour, you can come back and check it. Okay. So I think it's already too late. You guys can disconnect and I'll resolve it. Okay, guys. So I think we are good. You guys can enjoy the vacations. Let's connect on the Wednesday. Any last questions? Anyone? Any last question before you want to disconnect? Okay, perfect. So please try on your own. If you guys also get the issue, do put it on the group, or else I'll put it on the group in the next 1 hour. Okay. Okay, guys. Thanks a lot. Happy Diwali. Enjoy the vacations. Let's meet on Wednesday. Okay. So this always happens during the last class. Things don't go fine in the last classes. Okay. So Damini, you can close the session. Okay, I will. Thank you.